Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to our weekly scrims. And today, this is the first match for today. Usually, we have our matches from 6, but today it's 7. But on the caster's desk, it is Mia Suya and joined in by one of the special casters out there, one of the best analysts, as I used to know. It is Debbie. So, hi, Debbie, how are you? I'm feeling really good. So yeah, and this is gonna be the first time in a while that we've been casting together. So I'm looking forward to this as well. But let's see though, the teams Different are already ready perspectives to go for the expose weekly the scrim same number truth. 27. By the way, this is Two, happening on Friday as one. well. So best of one. I'm GraveNoise born will be with going against talent. Valiant Ghouls. So this is such a interesting name. One is with Grave, the other is with Ghouls. So yeah, we're gonna see something that's coming through here. But look You at are the band so first far. in the Marcel Paquito almost crossfire. taken away, and the Guinevere too. Yeah, pretty standard bands, I would say, unless they get nerfed. I can already see a god. Maybe they even ban out the god or the glue though. Usually, it gets banned in the second phase, but it is Butterflies what it born is. by thy However, the wish, Guinevere ban, maybe guided because of the by flex lantern's which goes light. around, she's kind of strong when it comes to controlling the jungle, especially when it comes to the first objective. Yeah. So I think Guinevere is such a good hero, especially against heroes that are very tanky. So I think this might be a way for Valiant Ghouls to set up for an I've been assassin waiting for for a too tanky long. utility for themselves as well. But yeah, it can go both ways because even assassin usually struggles. But carry ban again, I think with the glue and the carry and the Guinevere, Valiant Ghouls might actually go for a bit of a utility into the jungle now, but they are letting go of some completely different heroes, which GraveNoise can pick it away because even the Freya is completely left open. Definitely, and since the god is also open, Team Grave Noise can opt for the Oh, god. Yep, and there yeah. is also the Freya, just like you mentioned. But then again, Fovius isn't banned, so that's kind of questionable. Or they might even just, go See ahead and value in pick out me? the marksman. But You no, it is the should. Fredrin. Oh, Everything Okay, engulfed in wow. Team Brave flames. Noise. Maybe they just thought what you 10 thought, Debbie, years. and then they just Yeah. went and opted for the Fred themselves. But the Valley being Mm, an excellent option out there, but the god is still open because they picked up the Terisla. yeah. I don't know why the Terisla was picked up though. I think Terizla is one of a rare hero that can actually go against the Fredrin into those neutral objective fights, but that has to be the sole reason. But then it's not a hero that you wanna pick up into the second pick. It's like you wanna pick it into the last so that you will not be getting countered quite easily. There's no So time to for chit Grave Noise chat. now, if they wanna go for oh there we go, it's gonna be the God. This is a very beautiful pick. I think This land is our Villain Goals homeland, could and have it will went for the soon God be our instead of the burial Valier because ground. it's still a very good hero. And talking about the Terizla Your here, I think city's they not wanna just our try to counter home, at the Fredin only that. it But yeah, is Lapu Lapu who is a very good we answer to that are. as well as against the Valier because Valier is good against tanky frontliners, but the Lapu have a lot of crowd control immunity that can actually help him into this department. So it's a very solid pick from Grave Noise. Yes, definitely. And on top of that, God is just so strong, but then the only issue is lack of mobility. Mm, Really needs a good yeah, front line, and he already has Fredrin. Even the Lapu can dive in, and like it depends if the mm, Lapu's going for the dive or if he's going playing around the God just to save him. So I think a God will be Fight! playing really Fight for freely the right now. ultimate Even answer! the tank mm, pick hasn't been picked up, so let's see. I think a Belric can be a good Come option here on, because there is an Dexter. It's Atlas, our and he can just showtime. when and if anyone just jumps yeah. in, like in the Tesla, he can just taunt everyone in. But yeah, going up to the bands, the Claude, as expected, I was just thinking why the Claude was still open. But yeah, Hilda also Yeah. getting banned away. Quite the questionable ban because I don't think so. Hilda poses much threat unless they're opting for Muscle of iron, assassin jungle. bones of steel. Yeah, Assassin Jungles or even the Yi Xin 2, right? Now it doesn't make sense for the Villain Ghouls ban. They were trying to ban for a bit of a utility, but onto the last one, they are trying to opt to go for a ban so that at least they will have a very good assassin into the jungle. Maybe they are going for a different path because their hero is taken away here. But like you said, Claude coming late into the scene. But yeah,
I would like the Belleric from GraveNoise as well, because it's a very good counter engaged hero against the Atlas and even the Terizla on top Still of that. waters run So deep. that can be a very good pick-off. But Ling is the hero Thorns that they want to take remain, away. should But petals yeah, fall. Villain Coast, they banned for the Lancelot, which is kind of surprising because they banned away the Gatot. But I think they just think that maybe the Gatot can be a very soft counter for the Atlas. But I still think the Belleric is a better option. It definitely is. I think Team Valiant Ghouls, maybe they're thinking that Atlas as well as Terizla can drive the attention away. Meanwhile, the Mm, Lance can sneak in, take away the God, because you definitely need a dive in such a draft. And of course, it is a God. He will be a priority kill towards the late game. But for now, one Belric can even, completely destroy our Lancelot mhm, because I mean, of course, a good lance won't be, but then again, it is at the end of Belric. Let's just see though. mhm. Both the goal lanes are still yet to be opted out. Harith is open. Harith can Oh. work here. He's strong. Yeah. Oh, wait, what? Malachi enters the Alan's scene. not wait. Okay, okay. This is quite surprising to say the least. Hanabi is more surprising. Oh my goodness. What is the goal? Who is the goal leader here? Is it a Renko goal or a guy? What is happening? Um, maybe they just send God towards the goal at this point. Oh, yeah. I Nah. don't know. Just weird. We'll have to see in game, but I don't know. Franco is not really a good hero you want to go here. But let's see though. It's a Petrify Akai, and it's going top lane against a Hanabi. So that is a goal in Akai. I don't think this is a very good game for GraveNoise actually. Yeah, definitely. Especially with the DHS and Trinity build up, she will be shredding the Agai. Plus, she has, the more shield, Yeah. and I think she almost has Purify for most of her time, even though there is lack of mobility. So Akai can't even properly ult her with a heavy spin. I don't know what they were thinking, Yeah. because if it goes late game, they will face a lot of issues. There's heavy crowd control, but there's not much of a pressure that they can build up into the late game. Coming through from Sasibaka there, but he have a revitalize, which is surprising onto an Atlas. As an Atlas, you want to go for the surprise fatal links, but hey, maybe like you want to survive though, so that's definitely gonna be a bit of a problem here for villain goals. But early game will be completely fine because revitalize kind of heals a lot, and like you said, I don't understand what Moonlight will do against a Hanabi. That's a Hanabi who have a seal in it. That's basically a purify. So I don't think Villain GraveNoise got this in the bag because Villain Gold, they have the perfect setup for this turtle and even early game. I think there was an easy kill onto the Atlas, but unfortunately the Lapu is facing some MS issues, just like you said, and the first blood pretty easy for the Terizla for now. I don't know, Team GraveNoise, they do have a strong early, maybe. I mean, whatever they have is in the early, so even the early is not working pretty well for them. Especially with the EXP laner, you really need him near the turtle for the first utility objective, but he is not, just the issues there. But then the map control also, I think Team Valiant Goals, they are kind of rotating pretty fast if you do see. Yeah. They are fast with the Atlas, right? And the movements that you got from the river buff as well. So that's what they are actually waiting for. Kiyoshi, on the other hand, will be starting at the turtle first. This is what we were talking about when we see this lineup from Valen Cole. They have a very solid lineup already. Even with the value into the mid side against the Gore, it's actually completely fine because they were able to win out onto the XP lane, and they will be able to get another retribution cheat code that is gonna be the Lancelot as well. So when the Lancelot is able to get out the first turtle, it's definitely gonna be so much better for him because he is meant to be the one who deal the damage, especially against the God, who is the sole damage dealer from the side of GraveNoise. Yep, definitely. And we can already see even the Hanabi making her way towards the turtle. I think it's already pretty easy for them since Fredrin doesn't seem to be interested. Plus, his jungle speed did get nerfed, so against a Lancelot who is pretty fast, he will be having that level gaps. But the turtle already secured. Atlas
looking for some initiations. The hook doesn't really connect. Lapu also still level 3, nothing much to say. The jungle getting invaded. Fredrin might just counterplay, take away some creeps from the other side, but there's nothing left for him to take anyway. With this, the orange getting invaded, once again the damage and the stun coming out from the Atlas. But the hook comes in, inside the turret, one hit and the mistake, gosh. And Sasi Baka will be getting taken down, the flicker being forced away by the Lancelot. And with this, some stuns by the Valir, he's quite annoying. Same goes for the God with the stuns. And the second skill can melt quite a lot. But as for we can already see how much issues the Fredrin might face when farming. That's what, like you said, there's nothing for him to get the farm onto the top lane side, which is so much better for them if they had the creeps. But yeah, that was a very good, well-played game from the side of Valiant Ghouls, because they were able to clear out to their creeps first before going all in onto the turtle, and that's going all for them. But Flicker? Flicker and the Hanabi, the heavy spin also gets connected. Atlas joins up, but gets moved away. Flicker being forced from the Valir. I would say pretty good priority coming up. And the Lancelot with the kill onto the Franco. A kill for a kill, a goal for the roam. Definitely the Hanabi makes more sense. No, it's like, you know, I mean, he also got cooked, but then again, he was able to get at least some of the farms there, but K also survived that onslaught, so it's completely okay. But still, every bit of a goal has been into the hands of Valiant Ghouls for now. They have been able to take out the turtle, find the trades across the map, and deny every creep from GraveNoise as well, so that will come in handy for them. A bit of a focus happening onto the top lane side as well, because this next turtle is going to be coming through here. Level 6 for Sakai's TZ and level 7 for Kiyoshi. And the flicker onto the Hanabi, she does have the Purify, but doesn't really use it. The heavy spin comes in, Atlas getting forced right into the turret. One stun, and the Fredrin takes that kill. A rumor for a goal once again, and with this we do have the Valir doing some damage, and there is not trying to give a set, but is in a really low HP, not enough follow-up, not enough burst coming in from the side of Team Valiant Ghouls. And for now, the hook missing out. Lancelot trying to just dash away from the turtle, but I think it's a free and open turtle for the side of GraveNoise for now. If and unless Lance might look for some second-hand back play, goes after the gourd, and with the second skill, one basic attack, but unfortunately it is the Fredrin who manages to grab onto the turtle. With this, the stun misses from the gourd. Lancelot manages to dive away. The Atlas is also there, providing some, I would say, frontline. Hanabi gets that kill, but gets taken away as Lapu grabs that kill. The heavy spin also comes in. Volley really low. A flicker and double kill for the Lapu, but with this Kiyoshi will be grabbing onto another kill onto the Akai. The hook connects. Minimind needs to go back, but the flicker coming in from the Terrasla. One kill with that. The ultimate kind of wasted, but Atlas also joins in, follows up. 2 for 1. Really need to be careful though. He still has the flicker, does not have the art though. They are really trying to take down Kumar TZ for now. Okay, he just manages to dodge away those kills. And with this, the fight is so long. Fredrin making his way back. Will Atlas be able to move away? But now, another hook. And with this, pretty easy kill. Very so much of an easy kill, a perfect hook as well. But it's kind of bad from Valiant Ghouls that their marksman is always the one that gets taken down initially, even before they go for the fights. And then when Kiyoshi is trying to go for the entrances, he's always going to be getting denied. Look at that though, Brilliant. And kind of wasted, but Lancelot moves away with the ultimate, does not manages to grab that kid onto Mari Biscuit, and pretty neat escape coming in from the Lancelot. With this Hanabi making her way onto the mid lane, taking down the first tier. They're looking for it, but in the top lane we do have Akai versus Terizla. Once again, the Atlas provide. Hanabi needs to back off. She needs to play behind the tank, but it feels like she's the tank. That's what the positioning hasn't been that much of a pristine place as well. But yeah, Valiant Ghouls, I think this time around they should be the ones stopping onto the team fights again and again, because if they want to stay into the team fights, they should be the one having the damage onto their side. But they haven't been able to find the damage onto the hands of the Hanabi just yet. So they kind of have to be patient about it, because GraveNoise have enough tankiness that can come through into their hands that eventually will be saving them to tank out the damages here. But K, a quick tick out into the mid side. I don't know what happened there, but it must be a very perfect hook coming through from Kumar TZ as well. But Sasibaka?
They're going in for the next turtle. It is the Fredrin who manages to grab it once again. The fatal links, though no one is there to follow up. Kyoshi looking for some exchanges. We also have the Lapu Lapu trying with the bravest fighter. The flicker stun connecting onto the Atlas, and Sekis manages to grab on another kill. Hanabi and the Valir are making their way, but it's not enough. The time is way too late. And the Terrasla kind of suffering between 4 people. Lots of damage. The heavy spin pins him down onto the wall. Another kill for Mini Mind. The Kyoshi though finally gets a shutdown onto Sekis, but the Gord goes in with the flicker, and the Mystic Gush K falls into that exchange. And with this, the first tier taken away. Lancelot trying to come in for some defenses all alone. 1 versus 3. Will he grab that kill onto the Gord? Manages to grab it, but then again we do have another stun coming in from the Atlas. Pretty low Mini Mine. Double kill for Kyoshi out there. Franco just manages to move away. Going to recall. Same goes for Moonlight, needs to go back for now. The Fatal Links. Okay, that was kind of a mistake coming up. The stun connects in, and Sasi Baka falls with the damage coming in from the turret. Oh no, I don't know what's happening and what's going on here into the game, but there was eventually a lot of waste potential going to from the side of Valiant Ghoul as well. But they have been able to get out the kills, even though Kyoshi haven't been taken down just yet. I'm afraid that with them losing out onto the mid lane turret, they are gonna be kind of losing a lot of their momentum there, because they have that map to open up, and their jungle's gonna be pretty vulnerable. But a bit of a dive coming through from Kyoshi again onto the Gord. That's what they wanted to do here. Look at that mid side. They're just making up, I would say, not much of his skills being connected out there, except for the Lancelot. He's literally harassing God at this point. I think it's a pretty good Lancelot. But the stun's coming up. The hook also comes in. Will there be a bloody hunt? Yes. The Mystic Gush follows up, but the damage isn't enough as Atlas. No, he does not manage to move away. But with that, just look at the Lancelot dives in for the God once again. God kind of falling way too much. The stun, the taunts coming in from the Fredrin. Sekis being really annoying for the Lancelot at this point. There also dives in. The double kill legendary for the Lancelot, and somehow Kumar TZ is in a very dire situation. A guy comes in for the hell, but look at the push coming in, the stuns coming in from the Valir, the slow burn, but the hook comes in once again, and the bloody hunt, and Valir falls into that exchange. But bravest fighter, we'll have the stuns coming in once again, but the Hanabi really low, goes in, the flicker coming in from Kumar TZ, but an exchange for an exchange, the Mystic Gust comes in once again, 2 flickers coming in from both of them. Celestial Twilight needs to move back for now. Pretty extended team fight just near the base. Almost close to the base as well. Not too long for my liking on top of that too. But you can see there's more. Both of the XPs are the ones sustaining quite a lot. Already Endless Battle into the hands of Kyoshi there. He's gonna be able to chunk out the XPs of the front line as well with the help of the War Axe and the Brute Force too. So that's what he wanted to go for here. Onto the other hand, a Sky Piercer into the hands of the Gore, which have been dying quite a lot because of the presence of Kyoshi, will not really be the best case scenario for them here. So they kind of have to wait a lot for that too. And the blue buff taken away by Celestial Twilight onto the Terizla, who's been sustaining quite a lot, is perfectly fine. Low weight, look at that. Heavy spin comes in along with the penalty zone, a lot of stuns and crowd control coming in along with Mystic Gush, a lot of 2 damage, but then again Kumar CZ falls in the hands of Kyoshi. Look at the damage coming in from the Lapu Lapu, and with this, it was the Atlas who falls next, but Terizla still trying to move away. The stun connects up onto the Valir. They're still pushing through Kyoshi. Meanwhile, look at behind the scenes, just going in for seconds. The damage is way too much as 1 strike from that endless battle takes down the tank. With this 3 for 1, pretty good exchange. And the second tier also falls with the penalty zone. Just thought that might be someone getting caught off guard there. But the Lord is there and the push is there, even though the minions from all sides, they aren't that synced, but the Holy Shield Holy Shield already dropped out as early onto the game here, but it's still completely fine because it's already gonna be down anyway. So, but with this Lord coming through from the hands of Valiant Ghouls, this will be eventually an opener for them to play around the side lanes, so that they will be able to take out onto the side and play with the Lord into the next 2 minutes of the game here. But on the other hand, look at that. I think kind of a waste of the ultimate, but they're gathering up once again. The orange getting invaded. The second tier might fall pretty soon, as we might see some fatal links coming up. But look at the Terizla. She takes down the tower, but the Mystic Gush, unfortunately, Moonlight cannot really sustain the damage, which is coming in from the
Trinity from the Hanabi, but look at the Hanabi, where is she going? Ooh. The Mali follows out, the Fatal Links come in, and the penalty zone along with the Flicker goes inside the turret, but the Flicker onto the Hanabi once again gets that true damage from the turret, falls in that exchange. Kirisla just going in after sec kills, but really cannot take that kill as the fountain is there. The bravest part is the stun, the hook, still trying to sustain, but Minimind will be grabbing that kill. Meanwhile, Kiyoshi diving in for someone. The first inhibitor falls down, but everyone is still after Kiyoshi too. Atlas going in once again. Look at the clear, the Mystic Gush comes in, and the ultimate, and another kill onto the Mari Biscuit. And with this, he still manages to move away, even though there is the ultimate, the heavy spin from the Akai. This Lancelot, man. Yeah. He's just styling at this point with the Malefic gun. On top of that, he wanted to penetrate out the frontliner as well, because we could see the lineup coming through from the side of GraveNoise. They are all very, very tanky, and on top of that, he has been able to get into the backlines as much as possible, even without with the presence of Kumar TZ onto that front core. But yeah, I think the Queen's Wing kind of helped him into that dive onto the bases, because that's what they are trying to do. He wanted to dive it away. Look at that. The Bloody Hunt and 3 Fatal Links coming up along with the penalty zone of the Bravest Fighter also comes in. Hanabi takes down Minimind with the Mystic Gush, and K falls. Although K managed to grab onto Kumar TZ, Kiyoshi gets that kill onto the Akai. The stun's coming up, only God remaining, as well as the Brethren, who needs to recall ASAP. With this, 1 minion is there, Hanabi really wants to push through that base. God trying to clear up, and we have Sekis coming back. There are some stuns connecting, but look at the damage coming in from the Hanabi at this point. A lot of passive damage. Kiyoshi goes in for gore, trying to take them down, but another minion waves arrive, and of course they really can't do anything without MM. The lane clearing isn't there. Yeah, without the marksman, only the tanks when your front line's down, and when you are down to defend onto your bases, that's where it's gonna be happening. Very, very good game coming through from the side of Valiant Ghouls there. There was some tankiness into the side of the onto the other side, but you know, for GraveNoise, but they, like you said, they don't have the lead game that can clear out onto the minions or even defend onto the bases. They were all about getting the tankiness in. They were all about trying to get all those damage and not die. But what will happen when there's a Lancelot diving into your backline? And yeah, this was really... Yep. And in the mood I'm really surprised about is, like, I really like the Franco too. He was hooking, he was doing everything that was possible. I mean, he was pretty good, I would say, but then again, there is even a Franco, and yet somehow the Lancelot is diving in and moving away. That's the most surprising thing, right? Yeah. As well, he was so free. He was able to move in and out, and without getting even punished for that. So that's how free Kiyoshi was on today game. So next time when they appear into the weekly scrims, I suggest all the teams to ban away the Lancelot for him. But yeah, that's what we have for the game number 1 here. It was such a good warm-up class as well. So we'll be seeing another one after the break. So the next game is going to be coming. This is just the opener. So wait for the next one. So we will be taking a break, and yeah, we'll be coming back for the second one.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to MOBA Warmup Class Series powered by Algambo Esports. This is your boy STZ on the casting deck. Beside me, the beautiful lady is none other than Pitchy. Obviously, we both are here for another day at Algambo Esports to host the second game of the night between Team Mauryan Royals, who I were am the power previously of known light as Clutch incarnate. God, versus Team Mavericks. Of course. The thing I talked about Different Clutch God is perspectives because, expose the same two of the truth. players from Team 2, Maverick were actually a 1. part of Team Clutch God before. So they You have are been a part of facing this team. They Crystal. have been played with these players. It's Fly and G Razy, of course, who played for Team Mauryan Royals before when it was named as Clutch God. Then it got I am rebranded into Mauryan Royals. vengeance And now we can see incarnate. Victor and all Your being playing streets onto are that just our home. team. And Team Heroes Mavericks, they have been who had a we good are. run throughout the last week and this week as well. And whoever wants to close it with a defeat, they also want to go for a win here. But Team Mauryan Royals are not going to take it easy. They will try their best to take on the game far. Now the bans coming in. You can see the Kaja, Glue, and the Moscow. Quick bans from Mauryan Royals. So do the Team Mavericks. Gonna go for the Marshall as well as Atlas, and I think they had missed one ban onto the first panic phase. It's fine. Maybe their strategy, maybe the network problem. We can't say much. But it's a scrim, so obviously you can try out something. There's a Kimmy on the first pick, utility jungler about to come on. So are you going to go for a Fedrin trade? Because if you're not going for the Fedrin, there is a huge chance that Mauryan Royals might gonna grab it up for them. So definitely, I think Pitchy is There's back. no time to Hello, chit Pitchy. chat. How are you? How was the day for you? Night sky tells Back again. all. Looks like Kimmy is going to be onto the mid lane. Now, Let understandable, them they play the are trying hero. to, go I for will. a little bit I've been tankiness, waiting trying to for get too the slows long. onto their hands. The carry also says that they do want to pick up something like a Fredrin, but Team Mavericks really needs to take care of that to put that into the banning section. Let's see if that happens or not. So far, one last pick coming in, and I do think it's going to be something onto the marksman side, possibly a Claude, but at the same time, I really don't want to see a Claude right here because there's just too much damage coming in from Mauryan Royals that Chivalry the is Claude dead, might not be and able to I will perform. revive And it. there you go, a little bit range. That is good. Obviously. And like Pitchy, having a Clint against a carry is actually the most, like the proper counter for a carry. But at the same time, into the tournament scenario, we don't see the Clint much. It's because you don't have the early game snowball. And whenever you are going for the lane clearance kind of thing, you don't have it as well. So Clint is kind of a skeptical pick from the side of Team Mavericks. But as I mentioned you, as it is a scrim, they're going to try out something. They're going to pick something different towards the pocket, towards the irregular picks of the meta. So they're gonna try it, My and that's why mission they went for the is to Clint. G protect Razy onto lives. it, Victor onto that Mighty carry. Both oath of from them little have been acorns shining grow. throughout the weekly scrim clashes, towards all Algambo esports tournaments. And me and Devi Welcome have to been my scouting them a castle, lot. And my I'm definitely sure friend. if they goes like this, maybe in future they will be getting chance in some big teams as well. Because we have seen, like teams like Shadow Esports also played here in the Algambo esports tournament, and right now, they are onto the verge. So do the team Oishani Royals. We have seen those teams trying it out at Algambo Esports Weekly Scrim Clash, and right now they are onto the mark into the MOBA scene. Someone is in the Valor elite and leaderboard, someone royalty is in in a the mythic dead body. leaderboard, might be getting a chance to finish up in MLMS as well, the Pro League of India. So definitely the start, the you can say the start, the what I mean, the building, or you can say the building, the start should be here from here onwards, and that's why it is like the fundamental starting for a tournament Thou scenario. shalt Team succumb to Mavericks my going for the first pick in the power. second picking phase. The Kufra. What's your thought on this? Supra. That is actually a good pick right here. I do really love that the couples are onto the same side, talking about Esmeralda and the Cobra. But it is a bit experimental pick for me. Again, for one reason why, because this is the kind of a pick that has been not in meta for such a long time. There used to be a season where this was banned a lot, but
again, as Sand time rises passed by, when I give you the have word. a lot See of value in counters me? for it. So there you go. You Get a should. good counter. We are gonna get a Khalid as a Fredrin. Understandable. The Fredrin was predicted. They needed a bit of a tankiness on this side, but Team Mavericks do have a chance to pick an assassin. Now, this kind of a team composition, they are most likely to go for it, and that's going to be a Nolan, a back line diver. I really like how that it is going to work out a bit in early game into the hands of Mauryans Royals, but at the same time, if Team Mavericks is able to pick up the snowball, especially giving that snowball to Nolan, that's going to work out well. Definitely. Pichi, you know, like, I was thinking why the Fedrin was not banned here from the setup team Mavericks. I think that's a poor call for them because you could have banned it into the second phase. You know, there is a Kimmy, there's a huge chance we might gonna see the Fedrin in the jungle. But now, here we are into the glory, into the land of dawn for the game number 2. One team gonna shine, one team will have a defeat, and you know, like I told you, Mavericks, so do Mauryans Royals have a great wick, and they don't want to finish it up with a defeat. The side lane, side creep rotation started for the jungler into the throne leader. Okay, so far looking quite good. Looks like Nolan will have a bit of an increased speed just because he is a assassin having a bit of an advantage right here. Again, the Fredrin as the same note. I was expecting the teammates to help out Fredrin a bit so that he would be coming towards the lethal as well, but I might. Okay, Aaron being a little bit aggressive right there. Like the aggressiveness, but Victor does jump in for a backup. For a backup, and that was a good follow-up from Victor as well. I told you, like, this thing, from the very beginning, I told you there will be a great matchup in the goal lane. Oh, there's a little bit of Nick problem coming out for that Khalid. He goes back with the flicker, use the sand guard as well. A lot of resources got down from the mark right now for Team Mavericks Roma before the turtle. So let's see if they're gonna contest the turtle or not. But I believe they're gonna contest it because somehow, you know, like being a Fredrin player, you don't want to miss the turtle against a Nolan. So definitely you're going to try for it. Esmeralda against the Yuzong. We're gonna see the follow-up coming out from the Khalid as well. It's a little bit of poke onto that Esma. So far looking quite good. Maybe bottom lane we are able to see a first blood coming in. As you know, Evan is quite aggressive right there. There comes the bouncing wall. I like how Mauryans Royals are trying to capture the bottom lane as quickly as possible, trying to shoot them away while Nolan takes away the turtle. So far, Nolan will have to think about, oh my goodness, there you go, the jump. Black Dragon immersed. That's the falling star moon coming in, but that will be the first blood. Retribution on the mark. Turtle secured. We're gonna see the follow-up coming out from Victor as well. Infernal Purse. Oh no. Esmeralda in a very bad position will get the mark with a light wheel. He goes back. He's getting chased, but that will be a 1 for nut into the micro. 1 for nut into the macro. So, okay, they have not, want to just get it over right there. They try to get the purple buff as well, but no, that is not going to happen. So far, first blood into the hands of Team Mavericks, maybe trying to go for more, but it's going to be a slow start, so both of the sides don't have the proper game. Oh my goodness, Gravy does get knocked up, and oh no, into his own turret. He's looking quite low. He's trying to sustain that. He lets Father going down. Aaron does manage to take away the one that they were trying to go, but no. Nolan does get the kill. Now again, even if he suffered the first set, now if you start giving him kills like that, that is going to be a problem. Looks like the Mauryans Royals will be able to, get the score equalized. Overcommitment, Pichi. A little bit of greed. I just had a glimpse onto the eyes of Team Maverick. Team Maverick player. Okay, it's actually Team Mauryans Royals onto the blue, Team Mavericks onto the red. So, this is the thing, like, whenever you were trying to take down the goal laner, but you couldn't manage to do it, I know, but giving out 2 trades for a single is not at all a good idea. But right now, still, a team Mauryans Royals does have a better stand there. Mystic Gush comes in the way. That's a stun on the carry. He goes back, but that will be the fracture from the behind. Mr. Consistent
He took the savage last save. And this time, he will manage to take the carry down there. Victor couldn't manage to survive. Polva's not so ready there. There's a tornado coming in. They're trying to go for the turtle, but the river is onto the side. Kimmy trying to take down that blue buff. Don't want that invade to get succeeded from the side of team Mauryan Royals. But now, let's see. Oh no, raising Sandstorm, gonna go for the initiation. Kupra is getting tormented. Remember going in for the dash. You're gonna go for the beautiful ultimate and gonna get the flicker into the mark for the defense. And now, another invade. PG. Okay, super. We'll look at them consistent. We really got that to be like father who was overextending. Yep, that is right. 4 minutes in. Like, I don't think in almost 5 minutes, but still, that is going to be considered as a bit of an extra damage into the hands of Mauryans Royal. So far, they have been truly doing quite good and trying to take all the advantage. Oh my goodness, Eren, what a close call. Again, even though he did not get the kill, he has set on his mind that it is okay, it's just the tank. I'll just take away all the creep. So looks like Let's go. tries to go in once again. Wait a minute, Eren looking quite low. There comes the Esmeralda for the savior, Mr. Consistent. Oh my goodness, what a petrify combo. 3-man petrified. The god is trying to reposition the Sanford will be falling down right there. Kimmy, a really beautiful position, but wait a minute, that's going to be a lot of damage cost. So for the double kill, like, I mean, come on. The last hit was right there for him. Definitely, what a fight it was, but now another one. They're gonna go for the trade into the mid-tier 1, but before that, the minions waves will get cleared down. And I believe when you had a good start for your side, when you went for the 1-0, when you went for the first turtle, you had a better grip into the game. But then suddenly you tried to overcome it some things. You went on for the persistent engage, which was not even needed at that point. So I mean, that's what gave them a little bit of trade, a little bit of high ups here. And that's why Team Mavericks, they're kind of having a fun right now. 8 for 2. And they're having the lead into the game. And if they goes like this, then it will be a problem. But you do have a carry. You remember that thing into your mind. You know your late game will get shine up properly. But now, as the god is getting a proper, zone, proper position, fly, he managed to give some sets for his team. Turtle getting tried by this veteran for the 3rd time. We're gonna see the traction pulse coming in. Retribution this time from Consistent. He's gonna grab the turtle. Gonna go for the fight. Skimitar is on there. We're gonna see the star falling moon coming out from the Esmeralda. They goes back here with the dismantle. It's just the turtle for the side of Team Mavericks, and they will go for the tier 1 in the mid. Fracture. Okay. Team Mavericks really low on the gold as well. There goes Eren, and does look like it's going to be Mauryans Royals pushing their luck a little bit more than luck. They're trying to get those kills. Oh, there you go, Crazy with the last hit. Gets away with Eren. Now again, it's just 7 minutes into the game. This is the time that they will be starting to open up the turrets, and yes, they've done it with the mid. That is really looking quite good, while the team does give space for Crazy. Look at that, that is good, but Celestial Twilight jumps in quite aggressively right there, and at the right moment, you get a pause. I think there was some bit of network issue from the side of Team Mauryans Royals here. That's why they went for that pause moment, but looking after the map, looking right the situation is telling me that somehow Team Mavericks, they got the lead into the game. They're about to crush down that 2nd tier, and then they will have a proper map invade into the mid lane and expanded the map against Team Mauryans Royals. And it will be a little bit pressurized for them because the Lord is about to burge in 70 seconds, and they might gonna take the Lord as well. And if they manage to take out the Holy Shield, which is actually be possible for them into the mid, then they might gonna give a final finish into this game if they take out the backliner, because you do have 2 damage dealer, and it is Victor onto that carry and Sensei onto that Kemi. And if both of them will get taken out, then I don't believe that you might defend the base against a lot. You need the carry right now. You need the backline to be in the safe, and at the same time, Consistence is going to try Pichi to go into the backline and to take down the carry of the side of Mauryans Royals. There is much needed as of now, but at the same time, there has been a lot of space for Mr. Consistent as well as Celestial Twilight to actually jump in
take away those kills. Now, Scarsoul is also being there as a side character right there. I really like how, even though he's not shining much, but he is still right there giving that support the whole team needs. It's even Celestial Twilight who needs that little bit of a tankiness, that splash of the damage as well. Like, let's not forget he also has 2 kills on his hands, and Fly is the one with only assists so far. So, yep, that's going to be the case as of now. But Team Maverick looks like there's going to be a lot of pressure onto the turret. I still can't believe this is just a 8-minute game. Look at them. They are just trying to take away everything possible, and they have created that gold gap. Now, with this gold gap, if Team Mauryans Royals are able to take at least 1 or 2 kills, it's gonna be good. But no, a flicker into the hands of Victor just at the right time. So that is really good. But again, as a carry, now without a flicker, that's going to be really hard. Suddenly you see that all the tier 2s get down simultaneously into the game, and now it's just the individual standing strong with a proper holy shield around them. It might get bursted out before the Lord, or maybe into the Lord's first Lord infiltrate, but then you need to defend it up. As you mentioned about the gold gap, it is totally being seen here. That is 2k, not a big one, but still. If, as you mentioned, 2-3 more kills for Mauryans Royals, and they will equalize the goal gap. At the same time, will Team Maverick is going to give that set? Because when you had a grip into the game in the early phase of the game, you totally spread it out to them by going for some inconsistent plays, by some engages which was not even proper. And then now you are in the deficit. Even though it's not a high deficit, but still a deficit is a deficit. If you talk about the turret, not a single turret has been touched around Mavericks, while they have already destroyed all the outer and the mid turrets of your each and every lanes. And now, as I mentioned, the holy shields are up. The Lord is about to barge in. The Lord is marching into the mid, and they're gonna try to pop all this holy shield with this Lord in infiltration. So now, Team Mauryans Royals, their sole purpose is to defend this Lord and to take some gold out of it. Okay, first lot is very defendable. The second lot, I do believe, is going to be defendable as well, unless there are no turrets on the side of Team Mavericks. But they are getting poked off. The holy shield taken off so early is still a problem. You still have 2 more minutes to go, so they need to make sure to not give anything away, especially the turrets. I can't believe that. That was a hefty amount of damage. Suddenly discarded the carry into the backline. Yeah. I mean, Pitch are there. Okay, I think she's having some problem with the connection. But now you're going to see that double kill for this side of Team Mavericks here. They are on the mark. They have already taken down the carry. I mean, the CARRY kind of carry, not the K. Because, the MM and the Mage are going to be the backline carry here. And when you're taking them down, you're actually giving yourself more advantage into this game. And suddenly the 2k goal lead, Pichi, is being converted right now into a proper 7k goal lead. What are you going to say about it? So far, that is good. But Mauryans Royals are not giving out anything. That is such a good thing, because once again, them positioning so well, they are actually making sure to get those damage in. I really like that. But the team Mavericks, they need to step up. They need to go to do something right there. They do have the mobility, like you have seen that they are getting out of the way quite easily. But now Team Mavericks will have to think about contesting for the law. They have like 1 in a million chance to go for it, because Nolan, look at that, he's able to dish out so much damage that even as a Fredrin who is like twice and thrice x the amount of HP Nolan has, is still able to take 50, at least 65% of the HP. So you can tell how much Mr. Consistent has. Okay, Sanford does get targeted right there, but the Petrify did not connect. The Petrify wasted right there. Like, I did want to see a good amount of follow-up coming in from Eren, and then it
the Yuzhong could jump in with the Protipper. That could have been really good, or even around the Lord, but Lord gone into the hands of Mauryans. I mean, the way Consistent is playing right now, waiting for the perfect moment, and he knows that it's just a 12 seconds cooldown onto his fracture, and now even he is not at the level 15, so he'll have lesser cooldown, like maybe 9 or 8 seconds onto the fracture. He's utilizing it to at least give some blows or some like a little bit of damage onto the sustain ones. And as you mentioned about that thing, like he's kind of giving a lot of damage to the sustain one, and that's because the builds, the items has not been covered up yet from team Mauryans Royals. It's because look at it, like the Yuzhong is on a Hunter Strike, going to build Anticuris for him, and already build a Queen's Wing. So you don't have the capacity or sustain with the Queen's Wing. Same goes for the Khalid. He went for the Dominus Eyes and the Athena. So definitely nobody has like a proper defense kind of thing for this. Nolan goes in for the kill. Khalid goes down there. Light will be coming into the way. The carry is reaching a lot of damage from the behind. You can see the Black Dragon coming, and Kursal falls down as well. He goes in for the backline. Mystic Gush into the way. The burst is so high, but now the user got trapped down there. G-Razy got the kill on the Sandford. Mean is marching into the base. They're going to try to finish it out. They're locking down the moment as this move right onto the mark. Consistent goal to the backline. Dig down Nakugi as well as Victor there. It will be the end because always the minion is going to come in, and it's just the Fedrin who is going to sustain here. Can he manage to defend it? Can he manage to give it a chance for his team? Because all the ways one of the cannon minion goes in there. Consistent gonna go in for the crown. Crystal pop, and that will be it for the side of team Mavericks. Even though you had the grip onto the early game, but going for some unreasonable fights literally led to the fatal blow they just had into the late game onto them. Crazy amount of damage, and the Nolan getting that snowball also worked out very well right here. No, again, that was just too much. Like, they were not able to get out of the turret, they were not able to farm up anything, and even though they had such a good amount of draft, the execution as well, there were times where team Mavericks were getting those chance to jump in, but with having something as a Kufra, it really did not, they just did not push it a lot. They tried to get Victor as much damage as possible, but that was just not it for today. Definitely, what a game it was, but I think more discipline need to be shown from that side of Team Mauryans Royals when you had a proper amount of lead in the early game. I mean, you had a carry in. When you have proper amount of lead, you should take it forward, not to throw it down there. But I think it's a scrim, so they were trying something into their way. But definitely, Pichi, you need to tell this like consistent being onto that Nolan, ditching out all those damage onto that, Fedrin was really a on-par thing for me. But now, the show is not over yet, guys. We'll be coming back soon for the next game. Stay tuned with us, and the registration for the next week will be on soon in the website. So if you want to register your team for the next Scrim, which will be on Monday of the next week, then go and follow our Instagram handle, join our Discord server. You'll get the website link in the YouTube chat as well, into the description. You can join there and try in our website to register your team and come with your team for the scrims. With this, we'll be taking a short break, coming back soon with the next game.
न- नमस्ते देवियों सज्जनों, आप सभी को स्वागत करता हूं मैं टीजी। मेरे साथ रहेंगे टकलू बॉस शिनरा, जो कि साइतामा बन के आ जा रहे हैं यार। मतलब सही में यार, क्या फैबुलस दिख रहे हो आप। बट मैच जो है, नया दिन नया वीक, और मैच जो रहेगा आज दोनों भाइयों के बीच में रहेगा गाइस। एक तरफ रहेगी क्यूई नेब्यूला, एक तरफ रहेगी क्यूई नोवा। पहले भी ये मैच हो चुका है, पहले भी हमने देखा है कि नेब्यूला ने वहां पे जीत हासिल किया था, नोवा को हार मिली थी। आज कोशिश रहेगी नोवा की कि एक जीत तो हम लेके रहेंगे। तो ये सेकंड है, BO3 का सेकंड मैच, इसको समझ दीजिए। अगर यहाँ पे हारती है तो फिर क्लीन स्वीप करेगी नेब्यूला। तो वो बोला जाता है ना कि एक माँ के दो बेटे, क्यूई नेब्यूला क्यूई नोवा, ये दोनों बेटे हैं क्यूई के, क्वांटम एक्लिप्स जी के, और बिल्कुल। आज इनके बीच में वो लड़ाई हो रही है। टकलू बॉस, आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा पिक्स आने वाला है? और आपकी ये सफेद और चम चम आई मीन शाइन और टकलू का क्या रीजन है? देखिए वो स्मूथ काफी रहती है, हाइड्रेटेड आप रहोगे, पानी ज्यादा पियोगे तो आपकी भी स्किन मेरी तरह ग्लो करेगी। और उसी के साथ ही यहाँ पे बैन की बात करी जाए तो वो तुरंत आते हुए दिखेंगे, इंस्टेंट बैन यहाँ पे वो आते हुए दिखे हमको। पकीतो, अकाई, उसके साथ साथ एटलस, और चलिए पहला पिक यहाँ पे क्यूई नेबुला वो उठाते हुए दिखेगी जोशिन, और नोवा के पास रहने वाले दो पिक आते हुए दिखेंगे हमको यहाँ पे सोरा के साथ साथ घूशन। ओके, घूशन यहाँ पे उठाया गया है, थोड़ा सोचने वाली बात होगी। एसटीजी घूशन आई थिंक मिड की तरफ जाना चाहेंगे। जंगल की बात करूं ना, जंगल पे घूशन बहुत वीक है भाई। लाइक उनका फार्मिंग स्पीड इट्स नॉट किया है बहुत अच्छा है, और इन्वेड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर मिड की तरफ जाएंगे, जी नहीं, मिड की तरफ नहीं जा रहे, जंगल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो इन्वेड होने के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। थोड़ा संभल के आपको रहना पड़ेगा अर्ली गेम की तरफ। क्यूनोवा की तरफ से ये गुशन का पिक आता हुआ, उनके यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या फिर कुछ सिस्टम में बातें उनकी तरफ से। गुशन जाना चाहिए हमें इस गेम में। फिर बैन फेज में बातें यही हो रही है कि लाइक शिन्ना भाई, दोनों टीमें दोनों को बहुत अच्छे से जानती है। लाइक दे हैव बीन प्लेइंग विद ईच अदर। ऑब्वियसली एक ही और के दोनों टीम्स है, तो डेफिनेटली ये लोग स्क्रिम अपने बीच में करते होंगे। लेकिन ऑन टू द मार्क जब आप एक लाइव स्ट्रीम में आके खेलते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि आप ऑडियंस के सामने खेल रहे हो, आपका मैच कास्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके जहन में रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे नोवा को एक हार मिली थी नेब्यूला की तरफ से, तो आज नोवा उसका बदला जरूर लेगी, ट्राई करेगी बदला लेने के लिए। बट मैंने देखा कि नेब्यूला की तरफ से भी जंगलर जो है वो चेंज होता रह रहा है। पहले इनके अल्बर्ट आइंस्टाइन खेलते थे, आई मीन फीला खेलते थे। मैंने देखा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नोवा की तरफ से खेल रहे थे, उसके बाद एकदम से मैंने देखा कि उस दिन कोई दूसरा बंदा आ गया था नॉइजी करके। तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो लाइन अप ट्राई यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पता है कि ये स्क्रिम है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ विक्ट्री, बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिस ट्राई आउट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम वो सब सारी चीजें कर सकते हैं। भारत यहाँ पर पिक होता हुआ क्यूई नोवा की तरफ से। बहुत ज्यादा मैजिक कॉम्पोजिशन नहीं लग रहा है आपको उनके लिए, उनकी तरफ से यहाँ पे? जी बिल्कुल, 3-3 मैजिक यहाँ पे आपने दे चुके हैं। अब दूसरी साइड पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लैंसलॉट का आगमन आएगा, उसके साथ साथ वन डैश के लिए डैश वो आता हुआ हमको दिखने वाला है। फोबियस बैन रहने वाला है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। मिनसितार अभी भी खुले हुए हैं, तो शायद जा सकते हैं अगर जाना चाहें मिनसितार के लिए, क्योंकि मिनसितार के साथ अगर आप जाओगे ना तो आप 2 से 3 हीरो इजिली काउंटर कर सकते हो, और रोम मिनसी अच्छी तरीके से चल भी जाएगा आपका। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लाइनअप आपका बहुत ज्यादा स्क्विशी है। लैंसलॉट लेट गेम में इस बात का फायदा उठाते हुए अंदर की तरफ जा सकते हैं। पंचर से आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत देंगे, और चलिए वो डैश को रोकने के लिए यहाँ पे कूफरा क्यूइनोवा की तरफ से एक अच्छी कोशिश। ये टैंक जो है अच्छा खासा बोल सकते हैं कि आप दिक्कत तो जरूर खड़ी करेगा। Definitely, but look at it, guys. 1-1 and Lancelot. क्यूई नेब्यूला बहुत ज्यादा सीरियस है इस मैच को लेके, एंड 1-1 अगेंस्ट हैरत। ये बहुत दिनों बाद हम लोग देखने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये कैसा काम करता है वो देखने लायक होगा। बिकॉज आप जानते हो, मतलब क्रॉसबो रहता है, बट एट द सेम टाइम आपको वो स्टैक चाहिए होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को स्वागत करता हूं मैं एसटीजी में, साथ रहेंगे शिंडा फॉर द गेम नंबर 3 एट अलगैम्बो Esports मोबा वार्मअप क्लास सीरीज। क्यूई नोवा यहाँ पर क्यूई नेब्यूला के विरुद्ध दूसरी बार भिड़ती हुई इस पूरे वार्मअप क्लास सीरीज में, और आज जीत हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो बेइज्जती हुई थी। तो डेफिनेटली आज जीत कर जो है, मैंने बोला था कि लाइक आज कैंप में खाना नहीं मिलेगा नोवा को, तो बट आज खाना मिलेगा। शायद से मिल सकता है, शायद से नहीं मिल सकता, लेकिन कुशन जंगल बहुत स्केप्टिकल जंगलर है,
काम करता है, कभी कभार खाना नहीं करता। तो काफियों को नहीं मिला यहाँ पे, लेकिन इस बार देखते हैं किस प्रकार से आज ये जो स्थिति बनती हुई हमें दिखेगी। ब्लू बफ से यहाँ पे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, क्रीप्स की तरफ गए थे पहले, क्रीप को फिनिश ऑफ किया लैंसलॉट। ब्लू अभी जो है फिनिश ऑफ करते हुए हमें दिखेंगे। अब देखा जाए ना, जंगल रोटेशन में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। और गुशन की अगर बात की जाए, देखिए सबसे पहली बात ये कि गुशन जब भी फार्म करते हैं ना, वो वन ऑफ द स्लोएस्ट जंगलर में से एक है, और मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी, चलिए लीथो उनको मिल जाएगा, जाएंगे अपने रेड बफ की तरफ। दूसरी साइड की बात करें तो अच्छी पोजीशन यहाँ पे रहेगी, मेज के पास पोक किया गया है थोड़ा सा गॉड को, और लगातार यहाँ पे उठा के पटका जाएगा पीछे, लेकिन कुफरा वहां मौजूदा थे, आएंगे जरूर टर्न देने का प्रयास, बाउंस बॉल, लेकिन उसको रोका जाएगा यहाँ पे। दूसरी साइड की बात करें, टॉप लेन पे थोड़ा सा प्रयास चलता हुआ दिख रहा है, अभी वॉल लगाते हुए रोकने का प्रयास किया गया है। अब दूसरी साइड अगर बात की जाए तो गेम क्यूई नेबुला का जो है ना, वो थोड़ा सा लेट गेम की तरह बोल सकते हैं कि लैंसलॉट के जब तक 3 आइटम नहीं आएंगे ना, तब तक लैंसलॉट अच्छे खासे बोल सकते हैं कि गेम में इम्पैक्ट वो इतनी तरीके से नहीं ले पाएंगे। ऑन द अपोजिट हैंड यहाँ पे अगर बात की जाए क्यूई नोवा की, तो वो वहाँ पे इजी खेल सकते हैं, क्योंकि सोरा है उनके पास, सेटअप बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, पीछे की साइड से आए, बढ़िया कॉम्बो, मेज को फिनिश ऑफ किया यहाँ पे गुशन ने, और एक अच्छा एम्बुश। चलिए उसी के साथ खाता खुलेगा जरूर, और 1-1 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है। इस समय चर्चर के लिए आएंगे, चर्चर लेना चाहते हैं, लैंसलॉट मौजूदा है, लेकिन उनको भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अभी स्थिति अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। अंदर की तरफ जाएंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है बेबी स्पाइडर फोर्स, लेकिन यहाँ पे कॉम्बो लगाते हुए गए हैं, तो उसी के साथ चर्चर, लेकिन वो लेके जाएंगे गुशन, उनके हाथ में है, और फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है, वर्कसन करना पड़ेगा। स्टन देने का प्रयास किया है अभी भी, टैंक जो है यहाँ पे बाउंसी बॉल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा स्लो डाउन करने का प्रयास, उनको डैमेज देते हुए मेज जाएंगे पीछे से पोक करते हुए, सूरा अंदर की तरफ आएंगे, टेंडर फिश का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और अंदर की तरफ चाहते हुए गए हैं, स्टैक लगाएगा जरूर, और ये देखिए डैमेज आएगा, लेकिन वो स्टैक पूरी तरीके से लगे नहीं वहां पे। पोजीशन जो थी थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पे मेज सेफ खेलती हुई, और उसी के साथ टीम जो है बैक ऑफ होती हुई। बहुत ही बढ़िया। लेकिन टॉप लेन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है डॉफी ने यहाँ पर कमाल का खेल दिखाया है अगेंस्ट तेस्कानो। मौका ही नहीं दिया उनको सरवाइव करने का, दूसरी बार उनको डाउन किया है टॉप लेन पे, वो भी 1v1 सिचुएशन में, यहाँ पे कूदते हुए फॉर द सेट। पीछे हटेंगे जूशियन, उनके पास भी क्रिम्सन बेकन भी मौजूद है, और देखिए किस तरीके से अंदर गया है। गुशन की तरफ से एक छोटी सी गलती, रिट्रीब्यूशन आता हुआ पीछे यहाँ पे पड़ चुके हैं लैंसलॉट, थ्रोन रोज का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पुक करके भी वापस आएंगे। 4-2 का स्कोर। इधर क्यों नेबुला फिर से वो अर्ली गेम ग्रिप कर रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर लाइक नोवा के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास गुशन जंगल है, स्नोबॉल चाहिए उसको बहुत ज्यादा अर्ली गेम पे। टर्टल आपको मिला था, आपने क्लस्टर किया था, लेकिन किल्स वाइज अभी भी आप पीछे हो, 0-1-2 पे हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या उनका अभी रहने वाला है, वो देखने लायक होगा कि किस तरीके का स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं। हैरत फिर से फंसने वाले, लेकिन यहाँ पर जंप आता हुआ कुफरा ने जोन आउट किया है ग्रॉक को। ग्रॉक को गो बैक, थोड़ा सा टाइम देंगे कुफरा को यहाँ पर लाइक स्ट्रम्बल ना करने के लिए। गुशन यहाँ पर एंगेज करते हुए, उनको मिला है नॉक ऑन, अल्टीमेट का इस्तेमाल, अंदर गए लेकिन टेक चार्ज का पूर्ण इस्तेमाल, पीछे से हैरत आते हुए, लेकिन कुफरा यहाँ पर पीछे पड़ गए, किल उन्होंने ले लिया, लेकिन हेवी क्रॉसबो यहाँ पर आता हुआ, शायद से क्रॉसबो टैंक की मदद से यहाँ पर किल मिल सकता है। बहुत ही कम एचपी में सस्टेन करते हुए निकल चुके हैं क्रिम्सन बेकन, यहाँ पर फिनिश अप करेंगे ऑन टू दैट कुफरा। स्टार्ट हुआ था वहां पे 1-1 की तरफ से, खत्म किया यहाँ पर जूशिन ने। नेब्यूला ऑन 5, 3-4 कमाल का गेम प्ले आता हुआ यहाँ पे। गेम की स्थिति है थोड़ी सी भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है इस समय। नेबुला वो थोड़ा सा भारी पड़ती हुई दिख रही है इस समय नोवा की तरफ, और नोवा की बात करें तो उनकी तरफ से थोड़ा सा बोल सकते हैं कि संभल के खेलना पड़ेगा उनको। थोड़ा सा उनका ना जो गेम प्ले है वो थोड़ा सा एम्बुश टाइप का है। हीरोज आपने ऐसे लिए हैं जो एम्बुश करते हुए खेलते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा सेटअप देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोशिश रहेगी। टैंक की तरफ से आएगा जरूर, मेज की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लेड मिस होगा गुशन की तरफ से, पीछे हटे हैं। अरे तभी भी मौजूद है, पोक आएगा जरूर, गॉड यहाँ पे अच्छा खासा पोक करते हुए दिखेंगे टैंक को। दूसरी साइड की बात करें, अभी तक एक अच्छा खासा गैंग उसकी कमी महसूस हो रही है। टैंक कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे कुफरा की बात करें तो हर बारी आप नोटिस करेंगे फाइट इंगेजेस करते हैं, लेकिन वो अच्छी एक ओपनिंग नहीं मिल पा रही है। अब दरअसल जो फाइट है ना, हेरिथ का जो डैमेज है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लेट गेम में आएगा। उनका जब स्टालियम साइट वगैरह ये सब आइटमाइजेशन बनेंगे तो वो पोक डैमेज काफी अच्छी तरीके से आएगा। लेकिन दूसरी साइड लैंसलॉट है, उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। लैंसलॉट का डैमेज लेट गेम में काबिले तारीफ रहता है, उनका सस्टेन काफी अच्छा खासा रहता है लेट गेम में।
और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, डैमेज आएगा, टेक्टोनी चार्ज, स्टन किया जाएगा, एयरबॉट किलिंग स्प्री लेकर जाएंगे एमएम पीछे की तरफ से लगातार बेसिक देते हुए जाएंगे, लेकिन टैंक यहाँ पे फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए देंगे सीधा मिट्टू डायरेक्ट को, और वो लेन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समय मिडिल लेन की बात करें तो वहां पे अच्छा खासा सोरा का आप बोल सकते हैं कि एक कोशिश उनकी तरफ से आती हुई दिखी, लेकिन उनका जो टावर है वो वहां पे सेक्रीफाइस हो चुका है ऑलरेडी, तो स्ट्रक्चर वहां पे टूटेगा। मिडिल लेन का स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करी थी उन्होंने और काफी हद तक लेने में सफल भी रहे। चलिए ब्लू बफ लेती हुई दिखेगी क्यूई नेबुला, वो यहाँ पे आ चुकी है और कोशिश उनकी तरफ से भरपूर आती हुई दिखेगी। दूसरा के ऊपर प्रहार होता हुआ जाएगा, फ्लिकर फोर्स आउट करवाया जाएगा यहाँ पे, और अभी भी टीम जो है पीछे आ चुकी है। अब इस कॉम के साथ ना यही रहता है, भूषण का भी गेम अगर हम बोले तो अर्ली से मिड गेम तक रहेगा, लेट गेम में इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहने वाले, तो ये एक ना एक अथीना जो मैजिक डिफेंस है वो आएगा ही, और एक भी यहाँ पे जो मैजिक डिफेंस जो आएगा वो यहाँ पे 3 हीरो को आपके काउंटर करता हुआ दिखेगा, तो वो दिक्कत जो है ना कहीं वो बोल सकते हैं कि नोवा को लेट गेम में आने वाली है। एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे पकड़ती हुई टीम क्यूई नेबुला दूसरे टर्टल की ओर जाएंगी और शायद से उसको भी ग्रैब करने में जो है सक्षम रहे वो तीसरा टर्टल। तो यही कोशिश है कि यहाँ पे उससे पहले जो है कुछ स्ट्रक्चर जो है उसको सिक्योर किया जाए। छोटा सा गैंग कहाँ पे आता हुआ बॉट लेन की तरफ, सोरा ने फ्लिकर का इस्तेमाल किया, हुदीनी को जो है पनिश किया जाएगा और साथ ही साथ पीछे पड़ गए अभी गुशन के क्रिम्सन बीकन का इस्तेमाल, गोज इन फॉर द डैगर विद द सेम टाइम टेक चार्ज कनेक्टेड होगा, गुशन ने फिर से क्लच स्टील किया है, टर्टल को साथ ही साथ यहाँ पर फॉल भी कर जाएंगे, स्लेन ऑन टू द सोरा, गोज इन फॉर द चेज, अ पंक्चर कम्स इन, थ्रोन रोज क्लियर आउट किया, डबल इनटू द हैंड ऑफ एंसेलॉट, ही मार गो फॉर द ट्रिपल, पर उससे पहले डबल यहाँ पर सिक्योर करेंगे योसो, 4 किल और उसके बदले सिर्फ होया एक और टर्टल। डेफिनेटली ट्रेड वाइज अगर बात करें तो टीम क्यूई नेबुला जीता है इस फाइट को, बट अगर आप मैक्रो वाइज बात करेंगे विनोवा का वो पल्ला भारी था, बट डजंट मैटर, जब आप मैक्रो जीत भी रहे हो और उसके साथ आप स्किल्स हार रहे हो कहीं ना कहीं आप ही जो है एक बैकलैश पे रहते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्यूई नेबुला को एक अच्छा सोच रखना पड़ेगा क्योंकि उनके हीरोज बहुत ही स्नोबॉल बेस्ड हीरोज है, अगर उनकी स्नोबॉल नहीं बनती है तो फिर कामयाबी नहीं मिलती है। डेफिनेटली हैरत के तरफ से कितना ज्यादा डैमेज रहेगा बाद में वो देखने लायक होगा कि 0-3-1 पे वो डाउन है। डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम हो रही है फार्म करने के लिए अगेंस्ट द 1-1, अगर आप 1-1 को कंपेयर करोगे तो 3-0-2 0-3-1, तो डेफिनेटली वो असर आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा गैप है अगेंस्ट द 1-1 एंड हैरत। जी बिल्कुल, और यहाँ से देखिए स्टार्ट होती हुई दिखेगी ये कोशिश, यहाँ पे रहेगी टीम एम्बुश करने के लिए तैयार है, अंदर की तरफ जाएंगे और इसी के साथ जाल बनाता हुआ दिखेगा अल्टीमेट्स का, उठा के पटका जाएगा मेज के द्वारा जोशिन इस समय, और नाक पे दम रखा हुआ है यहाँ पे टीम नोवा के, लगातार उनको दिक्कत देती हुई दिख रही है, और ये देखिए डबल किल मिलेगा डॉफी की तरफ से, ट्रिपल किल ले जाते हुए दिखेंगे, मेज आएंगे पीछे से सोरा की तरफ से, कोशिश उनकी तरफ से, लेकिन नहीं, किलिंग स्प्री मिलेगा लैंसलॉट को, और उसी के साथ क्यूई नेबुला इस मैच को काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट करना अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो उनका टेम्पो था वहां पे उन्होंने लीड बना चुकी है। अब यहाँ से जो गेम है आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस रहने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये देखिए स्ट्रक्चर एक और गिरेगा यहाँ पे, बॉटम लेन का स्ट्रक्चर के ऊपर भी नजर रहने वाली है, एक लॉर्ड भी आ चुके हैं, इसके साथ साथ लॉर्ड पुश वो भी हमें आता हुआ दिखेगा, जिसके कारण बोल सकते हैं कि आप जो होली शील्ड है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास करती हुई देख सकती है टीम नेबुला, और उसी के साथ भूषण नीचे की तरफ काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे लड़े और नापू लापू को फिनिश ऑफ कर दिया, जिसके कारण थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज आ सकता है, लेकिन लैंडस्लॉट गलत जगह फंसेंगे मित्र, 4 बंदों के बीच में नहीं घुसना चाहिए था, शटडाउन मिलेगा जिसके कारण आपकी टीम को पीछे आना पड़ेगा और अब वो लॉर्ड के लिए नहीं जा सकती है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था लैंडस्लॉट को, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाने की जरूरत थी आपको। स्टिल उन्होंने बीट किया है 3 अल्टीमेट, तो मैं बोलूंगा कि एक तरीके से उन्होंने सैक्रिफाइस किया खुद को, बट एट द सेम टाइम अंदर इतना नहीं जाना चाहिए था। नोवा आपके पास मौका था लॉर्ड लेने का, एंड तुरंत मैंने देखा कि लापू वहां पे ओवर एक्सचेंज कर रहे हैं इनटू द टर्रेट, क्योंकि वो टर्रेट बाद में ली जा सकती थी। आप यहाँ पे पहले लॉर्ड लेने की कोशिश करते, गुशन गोज इन देयर, मिस्ड आउट द डैगर, थोड़ी सी गलती वहां पे ऑटो पे थी वो स्किल और वो कामयाबी नहीं दी उन्हें, बट यहाँ पे प्लेयर्स फाइट हुदीनी कम्स इन फॉर द एंगेज, उन्होंने इनिशिएट किया है ये फाइट को, लेकिन पीछे हटेंगे विदाउट एनी प्रॉपर क्लियरेंस। ये ऑब्वियसली लाइक पिछली बार की गलती वो दोहराना नहीं चाहते, अंदर गए थे, गुशन ने उनको सीधा पनिश किया था वो हाईली बर्स्ट डैमेज से, बट यहाँ पे दिक्कत में पता क्या है,
डफी बहुत ही कम एचपी में यहाँ पर शट डाउन होते हुए ऑन टू द मार्क अल्बर्टाइंस एंड गोज इन देयर बट रैंडम एग्जीक्यूशन पकड़ने की कोशिश यहाँ पर तोजी को, लेकिन तोजी फ्लिकर का इस्तेमाल करके पीछे हटने में सक्षम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे टॉर्मेंट किया जाएगा। हुदीनी को किलिंग स्प्री यहाँ पर सिक्योर करते हुए अल्बर्टाइंस गोना गो फॉर द लॉर्ड। यहाँ पे क्लच स्टील कर पाएंगे लैंस? अभी तक तो हमने जितनी सारी क्लच स्टील देखा है वो सिर्फ भूषण की तरफ से ही देखा, पंक्चर मिस किया है उन्होंने, टैग नहीं है। अभी थ्रोन रोज इस्तेमाल करेंगे टू गेट इनटू द मार्क। डिफेंसिव इम्यून पर गए थे वहां पे, मिस्टिक गश का इस्तेमाल, अभी थ्रोन रोज मौजूद नहीं, लेकिन वो पंक्चर का इस्तेमाल करके पीछे हटे हैं। हैरिस ने उस वक्त जो है एक टर्रेट निकाला है, मिड से एक्सपैंड किया है लेन को, बट अभी लैंसलॉर्ड उनके पास रिट्रीब्यूशन मौजूद है, बहुत ही कम एचपी है। अंदर जाकर इस लॉर्ड को क्लच स्टील करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना टीम क्यूई नोवा को इस गोल्ड लीड का गैप को रिलीज करवाना। जी बिल्कुल, और इसी के साथ कोशिश रहने वाली है, तरफ जाते देखेंगे, ट्राइन रेंज का इस्तेमाल जरूर किया गया है, 16 मौजूद हो रही है पीछे की तरफ से, सैक की कमी होगी जिसके कारण आप मेल्ट डाउन होते हुए देखेंगे। उसी के साथ रैंडम एग्जीक्यूशन मीच की तरफ से आएगा जरूर मॉन्स्टर किल, और ये देखिए तरफ गए ब्लेजिफाइड फोर्स, अभी भी लगेंगे जरूर अंदर की तरफ कोशिश, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, क्यों नेबुला उनके टीममेट्स वो धाराशायी होंगे, और उसी के साथ साथ हाइपर और मेज सिर्फ वो बचे हैं डिफेंड करने के लिए। लॉर्ड अभी भी आता हुआ दिखेगा, और क्वीनोवा एक तरफ से यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक समय पे क्वीनोविला जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप डोमिनेट करती हुई जा रही थी, गेम उनके हाथ में था, लेकिन स्थिति वहां से पलटी और लॉर्ड वो मार्च करता हुआ दिखेगा मिड लेन की तरफ से। देखना पड़ेगा टैंक अंदर की तरफ जाएंगे या नहीं, सिर्फ वेट आउट करना चाहते थे, और इस समय चलिए लॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर भारी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे नुकसान हुआ है आपके स्ट्रक्चर का। मिड का एकदम टरेट जो है वो एकदम आपका जो है टूटने के कगार पे आ चुका है इस समय। डेफिनेटली टरेट टियर आप बात करेंगे टॉप की, तो वहां पर कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए आ चुके हैं सब। जमान फोर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर हैरिस अंदर जाएंगे, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हुदीनी यहाँ पर आ जाएंगे फॉलोअप के लिए। साथ साथ पीछे से आप देख सकते हैं ग्रॉक आते हुए, लेकिन उनको जोन आउट करते हुए प्रॉपर्ली ऑन द मार्क के ऊपर अंदर जाएंगे। शिफ्टिंग पीपल बट थोड़ा सा मिस हुआ है वो सेट से फॉलोअप, ठीक है 1-1 आते हुए यहाँ पर एक छोटा सा टेक चार्ज Albert Einstein with the dagger goes in there. Hudri falls out, double out पीला ट्रिपल आता हुआ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले गॉड लाइक सिक्योर करते हुए यहाँ पर जूशिन पीछे से वो फॉल ऑफ दे रहे पक्की तौर से, एंड डेफिनेटली चेंज हुआ है यहाँ पर, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, किल्स का रेशियो गॉड अ लिटिल बिट ऑफ ओवर एक्सटेंशन, विल प्राइसी फॉर दैट कूपरा, डजंट मैटर। कन्वर्ट किया उस ट्रेड को इनटू द हैंड ऑफ कुशन, नाउ लॉकिंग डाउन द बेस, कम एचपी में यहाँ पर 1-1 जस्ट वन इट आउट, लेजेंडरी सिक्योर करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन कुशन को पूरा जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए। किसने कहा कुशन टूर्नामेंट में चलता नहीं? अगर आपकी कंफर्टनेस उस पे हो, अगर आपकी स्किल्स उस पे बहुत अच्छी हो, तो फिर आप गुशन ही क्या डेगी जंगल भी खेल सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव करते हुए यहाँ पर, स्टार्टिंग में उनको स्नोबॉल नहीं मिला था, स्टार्टिंग में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद किल पे किल, चाहे वो होदीनी हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो स्लैंग्स हो, सभी को उन्होंने टॉर्मेंट किया है अपने डैगर से। इतना ज्यादा पेनिट्रेशन उनकी तरफ से आ रहा है, इससे पता चलता है क्यों रैंक गेम्स में कभी कभार हम कुशन बैन देखते हैं। जी बिल्कुल, E=MC² की जगह अब होने वाला है यहाँ पे गुशन इजी विन, और उसी के साथ वो कोशिश यहाँ पे रहने वाली है नोवा की तरफ से। बहुत अच्छा तरीके से गेम को फ्लिप कर दिया है अभी पूरी तरीके से। अब बात करें यहाँ पे नेबुला, उनकी तरफ से कोशिश थोड़ी सी जरूर आती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते कि एक जो बोलते हैं ना कि टीम फाइट के बीच में सिनर्जी दिखती है आपको, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि नोवा की वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। क्योंकि आप उनके टैंक की बात करें ना, उनका जो इनिशिएट आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते कि एक की पॉइंट है। ये देखिए फिर दोबारा से आते हुए दिखेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बेट आउट करवा देते हैं कुपरा, और इसी बात का फायदा उठाते हुए ना पीछे से यहाँ पे अटैक देते हैं, लेकिन इस बार वॉल लगाते हुए जाएंगे बाबा उस चीज को अंदर की तरफ गए, टेक्टोनिक चार्ज सोरा आएंगे उसी के साथ, और मैं कॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं अंदर की तरफ, मौजूदा रहने वाले हैं, अभी भी डैमेज देते हुए जाएंगे, डबल किल तरफ से ट्रिपल किल मिल चुका है, यहाँ पे आएंगे लेजेंडरी लेके गए हैं, कोशिश उनकी तरफ से एक और किल निकालने की, जी बिल्कुल मौका नहीं, यहाँ पे वो टैंक आया, वो डैमेज आया, वो बेसिक अटैक जिसके कारण जीवन दान मिला है एमएम को, वरना वो गए थे यहाँ पे गुशन के हाथ से। डेफिनेटली कोशिश थी कि वहां पे जाते समय वो डॉफी को डाउन करके जाए, लेकिन एक बैकडोर करने की कोशिश तो काकनो ने भी रखी थी वहां पे, लेकिन सफलता नहीं मिला उन्हें उस चीज पर। कोई बात नहीं,
फिलहाल के लिए गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी शुरू हुआ है। मैं बोलूंगा आपने उनका बॉट टियर इनहिबिटर जो है बॉट का वो निकाल दिया, नेक्सस एक्सपोज कर दिया, बट अभी लॉर्ड के साथ उतरेगी टीम क्यूवी नेब्यूला। वो एक प्रॉपर सेट जो वहां पे लगा रॉक की तरफ से, स्लैंक्स की तरफ से, उसने बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि किल्स एंड प्रॉपर वे से उन्हें मौका दे दिया टू अवेंज ऑल दोज किल्स। अभी तक हमने देखा डोमिनेशन चल रहा था क्यूनोवा का, एक प्रॉपर सेट ऑफ गोल्ड लीड भी बन गया था उनका, इक्वलाइज कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर वो गोल्ड लीड अभी शिफ्ट हो चुका है। गोल्ड लीड मैटर भी नहीं करता क्योंकि गेम 16 मिनट के ऊपर चला जा रहा है, लेकिन बात यही है कि लाइक आपको एक्चुअली में जो आप एक लीड पे जा रहे थे वो लीड अभी आपके हाथ से छूट चुकी है, एंड ड्यू टू द सस्टेन कमिंग आउट फ्रॉम दिस रॉक लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे, लॉर्ड को डिफेंड करने की पूरी कोशिश। यहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप का इंतजार करते हुए स्लैंग्स क्या जाएंगे एक प्रॉपर टेक चार्ज के लिए, लॉर्ड स्लैम करती हुई टॉप इनहिबिटर पर यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं वो नेक्सस, हर तरफ से लिन को सिंक करती हुई टीम क्यूवी नेब्यूला अंदर जाती हुई यहाँ पर एक टर्रेट निकालना चाहती है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर आता हुआ क्यूवी नोवा की तरफ से, एक अच्छी डिफेंस स्ट्रैटेजी, आगे बिल्कुल भी नहीं गए, डिसिप्लिन वे से वहां पे खेला, मिनियंस को क्लियर किया और अभी शायद से एक एंगेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखोगे वो वेट कर रहे कि कब मुझे एक ओपनिंग दिखे जहाँ पे मैं या तो डफी या तो योसू को पकड़कर जो है पनिश करूं। जी बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इंगेजेस आ रहे हैं दोनों टीम की तरफ से, काबिल तारीफ यहाँ पे। और गुशन ना मैं बोलूंगा बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, उनको पता है कि उनकी वीकनेस क्या है और उनके जो है प्लस पॉइंट कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिलाई करते हैं, तो उस तरीके से गेम प्ले खेलते हुए भी दिख रहे हैं। अभी टीम फाइट की बात करें यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एमएम उनके ऊपर थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नजरें रहने वाली है कि टीम फाइट किस तरीके से होती हुई जाएगी। उसी के साथ वन अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, डैश की तरफ पकड़ना चाहते हैं, दो बंदे मौजूद रहेंगे, दोनों जिसका इस्तेमाल किया, पीछे गए, शट डाउन दिया जाएगा टॉफी, और उसी के साथ बढ़िया तरीके से जुगलबंदी बनाते हुए अंदर की तरफ आएंगे, टेक्टोनिक चार्ज यूज किया जाएगा एस्केप करने के लिए, लेकिन उनके पीछे लगातार सूरा पड़ते हुए देखेंगे, फिशिंग गर्ल्स का इस्तेमाल किया गया है और करते हुए दिया जाएगा उनको भी मृत्यु दंड, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बैक जोर पे लापू बेस को टारगेट करते हुए गुशन उनके पीछे जाते हुए दिखे, और एक एचपी प्लीज बचा है, मिनियन नहीं था, अगर मिनियन होता तो यहाँ पे गेम खत्म हो जाता, और इसी के साथ कोशिश पूरी जारी रहने वाली है। अंदर की तरफ गए मिस्टिकस का इस्तेमाल किया जाएगा, अंदर की तरफ जाते हुए रोकने का प्रयास, और उसी के साथ बेसिक रहेगा जिसके कारण शील्ड मिल सकती है, बचेंगे फैंटम एग्जीक्यूशन, लैंसलॉट लेजेंडरी पेज, और ये देखिए टोची फिनिश ऑफ करेंगे फाइनली, लेकिन मिनियंस वो आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे खत्म किया जाएगा पेज को फिनिश ऑफ करते हुए। काबिल तारीफ गेम पूरी तरीके से पलटा, आपने एक नजर चुकाई और उस नजर का फायदा उठाते हुए, वो ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हुए फाइटर यानी कि अपने लापू सीधा गए ऑब्जेक्टिव की तरफ, और इसीलिए गेम में बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव इतने ज्यादा मैटर करते हैं, एक नजर आपकी छुट्टी है लेट गेम में, बैकडोर होने का खतरा वहां से बढ़ जाता है, और जिस तरीके से ये बैकडोर यहाँ पे किया है अच्छा नहीं लगा होगा यहाँ पे इनोवा को, क्यों इनोवा का इस तरीके से हारना, क्योंकि गेम ऑलमोस्ट उनके हाथ में आ गया था, लेट गेम जिस तरीके से जा रहा था, लेकिन ये इस तरह की जो हार होती है एसटीजी वो अलग जो है वो दे के चली जाती है। बैकडोर की पहली कोशिश हैरिथ ने की थी, फिर वो सफलता नहीं मिला था, होदीनी आए थे वहां पे डिफेंस करने के लिए, लेकिन उसके बाद हैरिथ को टॉर्मेंट किया और टीम बैकअप नहीं की, होदीनी गए अंदर, बेस को लगभग खत्म कर दिया था, और वो लगभग खत्म ही उन्हें यहाँ पर जीत हासिल करवाया, क्योंकि वो मिनियंस का जाना अंदर, जाकनो आए थे और किल सिक्योर किया था फीला का, लेकिन मैटर नहीं किया क्योंकि जो मंशा था, जो टारगेट था, वो बेस लॉक ऑन करने का था डफी की तरफ से, उन्होंने कंप्लीट किया इस गेम को, फिनिश किया इस गेम को। क्यूवी नोवा 0 पे ही रहेगी, क्यूवी नेब्यूला 2 पे रहेगी। 2 बार भिड़े हैं, दोनों के दोनों बार नेब्यूला ने उन्हें फिनिश किया है। कुशन के साथ उतरे थे यहाँ पर जंगलर एल्बर्ट आइंस्टाइन, अच्छा खासा ईस्टर्न खेलते, लेकिन आज कुछ अलग सा ट्राई करना था उन्हें, और वो ट्राई करने के चक्कर में आज उनकी टीम जो है हार को चखना पड़ा उन्हें। बट ऑब्जेक्टिव वाइज अगर आप देखोगे, किल वाइज देखोगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना काम भरपूर से निभाया है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है अगर टेरेट पे डिफेंसिव अप्रोच दिखाया जाता, थोड़ा सा मैप अवेयरनेस रहता, तो शायद से ये मैच और भी कुछ देर तक चलता और शायद से लीड गेम पे आप डेफिनेटली जीत भी सकते थे, हो सकता था। बट इफ सो वाले वर्ड्स ज्यादा काम नहीं करते मोबा पे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप देते हो ऑन द स्पॉट, वही दिखता है। क्राउन यहाँ पर थोड़ा है नेब्यूला, कांग्रेचुलेशन फॉर द विन, बट स्टे ट्यून रहिए गाइस क्योंकि शो ओवर नहीं हुआ है। आते हैं हम फोर्थ गेम के साथ एट अलगैम्बो एस्पोर्ट्स मोबा क्लास सीरीज।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, ज्वाइन कीजिए डिस्कॉर्ड सर्वर। अगर आपकी टीम को खिलवाना है आपको स्क्रिम पे, तो फिर वेबसाइट पे जाके देखिए, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगा, तो फिर रजिस्टर कीजिए अपनी टीम को और आइए अपनी टीम के साथ टू ब्रिंग योरसेल्फ ऑन टू द ग्लोरी।
वेल चलो चलो आज आ चुके हैं वापस से हम मोबा वार्म अप क्लैश और आज हमारे नए अवतार में शिनरा जी साथ में। हेलो शिनरा, कैसे लग रहा है बाल बिना बाल हवा जाते हुए? अरे मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा। लाइक मेरे को लगता नहीं था कि पंखे की हवा इतनी ठंडी होती है, और आज अभी ऐसे फील हो रहा है, बहुत मस्त। और उसी के साथ आज के मैचेस जो है वो भी काफी अच्छे खासे जाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहला वाला मैच जिस तरीके से गया वो भी काफी मस्त था, लेकिन आज ये दूसरा जो मैच है वो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो टीम से वो खेलती हुई हमें दिख रही है। क्योंकि अब बात करें ना टीम्स की भी, उनके बीच में ही अगर हम कंपेयर करें, जब हमने फर्स्ट टाइम लाइक मोबा वार्म अप क्लास सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, तो उनके कंपैरिजन में अभी जो टीम्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया उनके बीच में। उनको एक आइडिया लगा कि किस तरीके से टूर्नामेंट जो है वो खेला जाता है, या टूर्नामेंट में किस तरीके का जो प्रेशर है वो आपके सामने आते हुए दिखती है। तो वो चीजें अभी दिखती हुई दिख रही है, तो लाइक अच्छा लग रहा है। और चलिए बात करते हैं आज यहाँ पे जो टीम्स है वो अभी खेलने वाली है सामने। एक तरफ रहने वाली है क्यूज जेनिथ। काफी टाइम से हम देख रहे हैं इनके तीन लाइनअप जो है हमें वो आते हुए दिख रहे हैं, और लाइक तीनों ही टीम काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करती हुई दिख रही है इस समय। दूसरी तरफ रहने वाली है टीम आर्लिंग एमएल। बात की जाए इनकी भी तो काफी अच्छी खासी टीम है। रोटेशन वाइज बात करें, मैक्रो वाइज बात करें, इनका भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना आज एक डिसाइडिंग मैच होने वाला है दोनों के बीच में कि कौन सी टीम जो है वो बेटर रहने वाली है एक दूसरे से। अब बात करते हैं यहाँ पे पिक्स या बैंस के ऊपर। तो बैंस की बात करें, मार्शल बैन आता हुआ दिखेगा, मिया हो चुके हैं। मिया काफी इंटरेस्टिंग बैन है। अब बात भी की जाए ना, पीछे आपने आजकल नोटिस किया होगा कि मिया बहुत ज्यादा पिक हो रही है। ऑलमोस्ट नंबर 7 पे आ चुकी है पिक रेट पे की बात करें अगर इस सीजन तो। और लाइक बहुत अच्छी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप जब मिया ले लेते हो आपके पास दो ऑप्शन आराम से आ जाते हैं। या तो आप डीएचएस के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो आप क्रिटिकल के साथ जा सकते हैं, और दोनों ही बिल्ड मिया पे डेडली है। एंड एक बात करेंगे तो आर्लेंग एमएल के लिए मिया जैसे हीरोज या जिलोंग जैसे हीरोज काफी कंफर्ट पिक में आते हैं, तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट बैन भी किया गया है क्यूई जेनिथ ने। बट क्या यहाँ पर हमें फोवियस देखने मिलेगा? बट फोवियस के पहले आई थिंक एक बैन यहाँ पर मिस हो चुका है आर्लेंग एमएल से। कोई बात नहीं, इट काइंड ऑफ ओपन्स अप एक और स्लॉट यहाँ पर आर्लेंग के लिए। बट डबल टैंक तो मतलब हमारे अकाई जो है वो टैंक मतलब जंगल करने वाले हैं एंड बेलरिक को रोम पे बेचते हुए। एंड आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस टू सी क्या लेंगे मिड पे एंड मार्क्समैन में, क्योंकि आर्लिंग एमएल जो है कंफर्ट हीरोज पे काफी ज्यादा खेलती है एंड मुझे काफी बड़ा बहुत अच्छा लगता है उनका गेम प्ले। तो देखते हैं क्यों जो पूरी की पूरी तरह से मेटा हीरो ले रही है क्या करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए गॉड यहाँ पे आज हम देखेंगे पकी तो चलिए वो थोड़ी सी बोल सकते हैं ना कि आजादी यहाँ पे नहीं दी जाएगी इनको बेलरी के द्वारा, क्योंकि इतना ज्यादा सीसी है लगातार। और लाइक आप बोल सकते हैं कि एक लगातार सीसी आपको पड़ेगा तो पकीतो जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हैवी स्पिन की बात करें तो वो भी आएगा, तो वॉल पे आपको जो है पिन डाउन कर सकते हैं बहुत इजीली। और अब आपको जो है थोड़ी सी डीपीएस की जरूरत पड़ी है। अगर किमी मिड लेन पे ऐसे कुछ हीरोज आते हैं तो अच्छा खासा रह सकता है। किमी नहीं आते तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि लूनॉक्स वगैरह या फिर लुओ ऐसे कुछ हीरोज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको अब गार्ड करने के लिए फ्रंट लेन भी रहेगा और आपके साथ एक हीरो भी रहेगा डिसंगेज के लिए। चलिए रेंज के साथ जाते हुए दिखेंगे यहाँ पे, और उसी के साथ लेजली का आगमन होगा। Okay, okay. Leslie onto the marksman. Interesting pick. आर्लिंग एमएल के हाथ से, बट यहाँ पर क्यों ही जेनिथ जैसा खेल रही है रोम पे यू नो ग्लू। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर ग्लू काफी अनोइंग है। अनोइंग के ऊपर बात करेंगे तो पकीटो भी है। पकीटो इज वेरी गुड एट फ्लाइंग बैकलाइन पकड़ने को। एंड उसी के साथ गॉड के बारे में भी बात करें तो उनका पोजिशनिंग हमने अभी 7 बजे से देख रहे हैं कि जब भी गॉड पिक होती है काफी कम डेथ होती है, मे बी एक डेथ या एक डेथ से कम। तो यहाँ पर भी यहाँ पर पोजिशनिंग कैसे होगी देखना चाहिए। बट क्या बेलरिक पिकर लेंगे या नहीं, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। बट बैंड सेक्शन पे एक्सबॉक निकाला गया है एंड एक्सबॉक के साथ वो होगा जूशन। यहाँ पर मेज चाहिए टीम आर्लिंग एमएल को एंड मेजेस भी यहाँ पर टारगेट हो रही है। बट अगर मेज के बारे में बात करें तो मे भी यहाँ पर वलीर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम्म, वलीर
बोल सकते हैं आपकी एक ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। और लाइक डिसंगेज आता हुआ देख सकता है, वो स्लो डाउन जरूर आता हुआ दिखेगा। पकीतो के लिए एक बुरी खबर बन सकते हैं वलीन। उसके साथ साथ ग्लू को भी अच्छा खासा बोल सकते हैं कि आप डिसंगेज कर सकते हैं। अल्टीमेट की सोर्स इसी से बचते हुए दिखेंगे, लेकिन ये एक्सपी पे यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और डैमेज ही एक्सपी। और इसकी जरूरत भी थी टीम आर्लिंग एमएल की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी टैंकीनेस इतने हो गए थे, तो एक्सपी पे सस्टेन एक्सपी उठाने का कोई मिथ यहाँ पे बनता नहीं है। तो यहाँ पे बेनेडेटा इसलिए उठाया है ताकि जाएंगे अंदर डैमेज देते हुए और उनके अल्टीमेट के थ्रू बैकलेन को यानी कि गॉड वगैरह को टारगेट कर सकते हैं इजिली। तो वो भी यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल टीम आर्लिंग एमएल उनकी तरफ से जो ड्राफ्टिंग आ रही है वो काफी अच्छी ऑन पेपर, जो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी नजरते हुए आ रही है, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो रेंज भी है, डैमेज भी है, सस्टेन भी है, उसके साथ साथ सीसी क्राउड कंट्रोल भी भरपूर रूप से है। Because I saved my nation from falling apart. क्राउड कंट्रोल पे कोई कमी है नहीं, बट अभी यहाँ पर QE, Zenith, Nathan और YSS आई थिंक कुछ तो बग हो गया है। ओके वो ज़ेटियन है, नॉट ज़ूशियन। ज़ेटियन अंडरस्टैंडेबल यहाँ पर। मे बी लिया जैसे हीरो अगर होता तो थोड़ा काफी अच्छा होता ज़ेटियन के बदले, क्योंकि टीम क्यूई ज़ेनिथ के पास थोड़ा बहुत स्टन प्लस बर्स्ट हीरो है। बात करें तो YSS और नेथन की, तो बचने के लिए मे बी ब्लैक शूज होता। एंड यहाँ पर फॉर नाउ ज़ूशियन का पैसिव हेल्प करेगा, बट पैसिव का कूलडाउन इतना ज्यादा है तो वो पोजीशनिंग बहुत मैटर करता है। तो देखते हैं, ये हुई हमारी ड्रॉप क्यूई ज़ेनिथ वर्सेस टीम आर्लिंग एमएल, कौन जीतेगा। क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस होती है। स्क्रिम्स जो है, नए लाइनअप लेके आओ, नए हीरोज लेके आओ, ट्राई करो कैसे वाला रोटेशन आपके लिए काम करता है। एंड जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नए जंगल रोटेशन भी आ चुके हैं, तो मे बी व्हाई नॉट ट्राई थोड़ा सा हेल्प करे सो दैट वो जल्दी जल्दी, या मे बी एनिमी का ही बॉक्स उठा के लेके जाए, वैसे कुछ ट्राई करने होगा या नहीं देखते हैं। इसी के साथ चलिए लैंडोटॉन की तरफ। और उसी के साथ जब वापसी होती हुई में देखेगी स्क्रिम बॉय, वो यहाँ पे मौजूदा रहेंगे, जाएंगे अपने दूसरी साइड से। वाइसस के पास थोड़ा सा एडवांटेज बोल सकते हैं कि आप वो रहने वाला है। लेन क्लियरिंग के साथ साथ जो है फार्म क्लियरिंग इजीली कर सकते हैं, तो जंगल क्लियर उनका आराम से होगा। इधर ऑन दी अदर एंड बात करें अकाई, उनके ऊपर थोड़ा सा नर्फ आया जिसके कारण जंगल स्पीड थोड़ी सी कम की गई है। क्रीप के ऊपर जो डैमेज है वो जरूर थोड़ा सा कम किया है आपका, लेकिन दूसरी साइड पे वहां कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि अटैच स्पीड वो जरूर बढ़ाते हुए दिखेंगे। उसी के साथ ये देखिए सीधा आएंगे गोलम की तरफ, वो इंपॉर्टेंट गोलम यहाँ पे चुराने का प्रयास, लेकिन आप भूल गए यहाँ पे कि दो सस्टेन है और उसी के आपको यहाँ पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों ज़ेनिथ देंगे यहाँ पे अपना पहला, चलिए दूसरा भी किल मिलेगा। और ये गलती यहाँ पे साबित हुई। अगर असैसिन रहते जंगलर तो जा सकते थे आप इन्वेड करने के लिए, लेकिन आप भूल गए कि सामने दो यूटिलिटी है और ऐसे वैसी यूटिलिटी नहीं है। ऐसे यूटिलिटी है जो आपको टॉन्ट कर सकते हैं और टॉन्ट करके आपको लॉक इन कर सकते हैं। तो वहां पे एक गलती आप जो है वो बोल सकते हैं कि होती हुई दिखी है टीम क्यूई ज़ेनिथ की तरफ से। डेफिनेटली क्यूई ज़ेनिथ यहाँ पर विद वाइस जैसे हीरो ऐसे इन्वेड करने जाओ तो डेफिनेटली नॉट इट। यहाँ पर मे बी स्प्रेडर होते तो बच के भी निकलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता, बट इन्वेड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हीरो। तो यहाँ पर वो टीम अगर नेक्स्ट टाइम से ध्यान पे रखे तो वैसे हम सिनेरियो देखने मिलेगा। बट सिम जो है बॉटम लेन पे दवाई में समझाते हैं, अब तक नहीं, बट कंकसिव ब्लास्ट ऑन बेनेडेटा, दिस इज न्यू दो फॉर मी। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि जो लेन क्लियरिंग है वो थोड़ी सी आपकी फास्ट हो जाती है। उसके साथ आप जो है ज्यादा इन नहीं करते, आप इजीली जो है जाके सीधा लेन जो है वो क्लियर आउट हो जाते हैं, तो मल्टीपल टारगेट आप हिट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज की तरफ रहता है। और चलिए यहाँ पे देखिए आएंगे जरूर, लेवल 4 होते देखेंगे। I4 है, लग सकता है अंदर की तरफ गए हैं, लेकिन टॉप लेन उधर ऊपर की तरफ अगर बात करें तो वहां पे भी दिक्कत होगी। ग्लू को वहां पे फिनिश ऑफ किया और चलिए टर्टल की तरफ आ चुके हैं। इस समय टर्टल लेने के लिए तैयार है, डिसंगेज उनके पास मौजूदा रहेगा और बेनेडेटा भापेंगे जरूर। उस बुश में कोई हो सकता है, जो बिल्कुल अंदर की तरफ जाएंगे। डैमेज जरूर दिया है, पोक करने का प्रयास, लेकिन पीछे हटाया जाएगा। अभी बाकी तो मौजूदा है वहां पे, दिक्कत दे सकते हैं और अपर कट मारने का प्रयास किया था, पीछे की तरफ आएंगे, लेकिन टर्टल एस्कर बॉय वो चुरा के ले जाएंगे सामने से। ओ ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे दिक्कत आया, पूरा एट्री लगा नहीं और मौके का फायदा उठाया वहां पे एस्कर बॉय ने। आए सीधा लेके गए वो टर्टल अपनी टीम के लिए। और थोड़ा सा अर्ली गेम पे बोल सकते हैं कि जो
थोड़ा सा गैप मिला था ना, वो कहीं ना कहीं अब फिल होना स्टार्ट हो गया है। कोशिश रहेगी पीछे की तरफ आए, फ्लिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लू यहाँ पे उनका बोल सकते हैं आप यूटिलिटी फ्लिकर, वो यहाँ पे यूज करवा दिया गया। अब दूसरी साइड बात करें बेनेटा, उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा, लेकिन उधर की साइड यहाँ पे एक और जी, ये भैया टीजी वाले बंदे भाई बड़े खतरनाक होते हैं यार, अच्छे तरीके से खेलते हैं हमारे। अब बात करें हमारे टीजी की भी, वो भी बड़े खतरनाक बंदे हैं। कुछ टीजी यहाँ पे है उनका नाम, और बढ़िया पगी तो खेल रहे हैं इस समय, और उनको पता है कि पेनेटा के अगेंस्ट लड़ना फायदेमंद नहीं रहेगा, इसलिए उनको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप ओपन छोड़ के ना स्क्विशी हीरोज को यहाँ पे टारगेट करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मेज को यहाँ पे किया, जिसके कारण वो किल उनको मिला। शुरुआत अभी होती हुई दिखेगी, और देखिए पोक करके सीधा पीछे हटे हैं, ज्यादा डैमेज देने की दिक्कत नहीं है, और रोटेशन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। इस बार ब्लू बफ को निशाना बनाना चाहते हैं, अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे, अंदर की तरफ गए जरूर है, डैमेज आएगा। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया है, और रीजन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बचते हुए जाएंगे जी, नहीं सुगरू डबल किल मिलेगा अल्टीमेट का इस्तेमाल करने से पहले, ट्रिपल किल, और बढ़िया शुरुआत यहाँ पे होती हुई क्योंकि जेनिथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाला, और इस समय जो स्थिति है पूरी तरीके से चेंज करते हुए दिख रहे हैं। You know, even though starting से हम देख रहे हैं थोड़ा ब्रॉली जैसे हो रहा है, इट इज लाइक ये तो एक दूसरे के हाथ पे किल्स ऐसे ही दे रहे हैं। लास्ट में देखा तो पता नहीं क्यों यहाँ पर जो हमारे सिम जो है जंप कर दिया है, पता है सुगरू के मुंह पे सीधा आ गया, खत्म, ट्रिपल किल इजीली। यहाँ पर अर्ली गेम में नेतन को इतना ज्यादा फार्म, लाइक वो 200 लाइक 600 गोल्ड यहाँ पर उनके हाथ पे, ऑलमोस्ट आधा आइटम उसके साथ बन जाता है, एंड उसके ऊपर से वो डबल लेन फार्म कर रहे हैं। तो टॉप लेन खाते हुए मिडिल लेन भी आ रहे हैं, बट ओके यहाँ पर एक रैपिड फायर आते हुए निस्तारो का भी लोड, और ईदी को किल मिल जाएगा, बट बैक लाइन पे वाई सॉन्ग ट्राई कर रहे थे निकलने को, बट वो जो हैवी स्पिन है काफी बहुत महंगा रहा, एंड यही बात कर रहे थे, इवन दो माना नहीं है बेसिक अटैक के ऊपर काफी अच्छी तरह से। ओके एक मिनट, एक फ्लिकर रीजन करना चाहते हैं, बट गलत करके से एक डबल किल लेते हुए यहाँ पर सिम का शट डाउन ले जाएंगे। यू नो आई डोंट थिंक वो बेलेरिक को वहां पर किल लेने का मे बी अच्छा था, क्योंकि काफी लो हो गए थे। हाँ माना कि वो रीजन करना चाहते थे अपने बेसिक अटैक से, क्योंकि माना नहीं था, बट वो दैट वाज नॉट द गुड डिसीजन राइट हियर फॉर सुगुरु, क्योंकि इतना ज्यादा गोल्ड आ चुका है, इतना ज्यादा एक स्नोबॉल आ चुका है, तो व्हाई गिव इट आउट टू योर एनिमीज। जी बिल्कुल, अरे छोटी छोटी मिस्टेक ही रहती है, जो आप शट डाउन गोल देके जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है धीरे धीरे, और वो यहाँ कहीं ना कहीं आधा हुआ दे सकता है। और उसी के साथ पीछे से आएंगे माउंटेन शॉकर का इस्तेमाल, लेकिन अल्टीमेट यूज करते हुए मैंने अंदर की तरफ चाहती हुई दिखेगी, शट डाउन मिलेगा। उसी के साथ और कोशिश का प्रयास जरूर किया था शट डाउन का, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। उसी के साथ ग्लू को रोकने का प्रयास किया जाएगा, फ्लिकर यहाँ पे बेट आउट करवा दिया गया है, दूसरी साइड में मौजूदा रहेंगे, अल्टीमेट ग्लू यूज करेंगे जरूर, लेकिन पकड़ा कोई जाएगा नहीं। ग्लू अभी भी मौजूदा है, यहाँ पे लगातार डैमेज देते हुए दिखेंगे। मिस्ट्रिकस का इस्तेमाल किया है, और इसी के कारण जो टीम है वो पीछे हटी हुई है, लेकिन चल वो किसके हिस्से में जाता हुआ दिखेगा, कुछ चीज वहां पे मौजूदा है। बेसिक अटैक यहाँ पे लगेगा जरूर, उसी के साथ अपरकट दिया था यहाँ पे, और ये देखिए किंग ऑफ गर्ल्स वो जाते हुए देखेंगे, ग्लू का किल उनको जरूर मिलेगा। माउंटेन शॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर जाएंगे, लेकिन उधर को भी यहाँ पे स्टन पड़ेगा, जिसके कारण वो धाराशायी होते हुए जाएंगे, लेकिन कुछ चीजी वो मौजूदा है समय का पहिया बदलने के लिए, अपनी टीम की किस्मत बदलने के लिए। और उसी के साथ एक बढ़िया फ्लिकर, नॉट फ्लिकर, यहाँ पे पेट्रीफाई कॉम्बो आता हुआ दिखा पेनेटा की तरह से, लेकिन सुगुरु आई बहुत ही अच्छा खासा, आप बोल सकते कि इनको वो यहाँ पे पफ मिल गया है यार, बहुत अच्छा खासा फार्म मिल गया है। अब नेतन और ज्यादा डैमेज आपको देते हुए दिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो रेडियंट की आवश्यकता रहने वाली है, और उसके साथ साथ रेडियंट के साथ आपको जो है फटाफट से एक चेल्सा पॉडरिन वो बनाना पड़ेगा, तभी आप जाके नेतन को थोड़ा सस्टेन कर पाओगे। लाइक काउंटर्स तो डेफिनेटली है दोनों के साइड पे, काफी अच्छे तरह से हो रहा है। यहाँ पर क्यूई जेनिथ जो काफी कम स्कोर पे थे, वो अभी बढ़ते बढ़ते टीम आर्लेंग एमएल के आगे पहुंच चुके हैं। ये देखिए वाइट नाम थ्रो काफी लो, एक मिस्टिक गश बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत किल्स आ रहा है। क्राइसिस यहाँ पर गॉड
कि क्या बच पाएंगे या नहीं। मोमेंट्स भी तो उनके हाथ पे है, बट किंग ऑफ ऑलर्स नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर मिड लेन पे थोड़ी बार बात करें तो वाइस तो पता नहीं क्यों उन्होंने रिकॉल नहीं मारा, एंड उसी के साथ डोरीनी भी यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा। सेन और सुगुरु को नहीं मारना चाहते हैं। ओ गए पेट्रीफाई कॉम्बो के साथ, पर वो पेट्रीफाई कॉम्बो काफी दूर रहा, एंड वापस से सुगुरु को किलिंग स्प्री। अभी टरेट्स उठाएंगे, टरेट्स के साथ आई थिंक यहाँ पर इवन लेज़ली को फार्म अप नहीं हुआ। ये देखिए लेज़ली का गायब। ये बड़ा खतरनाक डैमेज आता हुआ दिख रहा है नेतन का इस समय। लेज़ली की बात करें ना, पूरे बैटल फील्ड पे नहीं दिख रही है, जैसी आती है वैसी गायब हो जाती है। और ये देखिए कोशिश यहाँ पे रहने वाली है, अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा और ग्लू उनको अंदर लेके गए। टावर की सवारी करवा दी गई है को, और उसी के साथ अकाई वो किल लेते हुए देखेंगे। दूसरी साइड की बात करें अभी तो वहां पे रिकॉल का थोड़ा प्रदर्शन आता हुआ दिखेगा। स्कर बॉय वहां पे मौजूदा टीम की तरफ से, और ज़ेनिथ काफी अच्छी तरीके से गेम प्ले यहाँ पे करती हुई जा रही है। लेज़ली पे कितना अच्छा खासा काम में आ नहीं रहा है इस समय, ना वो कुछ कर पा रही है। डैमेज की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस समय। डेफिनेटली देखना पड़ेगा क्योंकि ज़ेनिथ क्या करेंगे, क्योंकि टीम आर्लिंग एमएल के बारे में बात करें तो उनका लेट गेम पे काफ़ी है चांसेस, बट अगर इतना लेट गेम तक रुक भी जाएंगे तो क्योंकि ज़ेनिथ बेस खत्म करके गेम खत्म कर लेगी। तो यहाँ पर लेज़ली को थोड़ा बहुत ज़्यादा फार्म देना पड़ेगा। एंड अगर काउंटर पार्ट नेतन के बारे में बात करें तो उनका तो हो चुका है, थोड़ा बहुत आइटम्स देखने मिलेगा क्या, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर मे बी दोनों मार्क्समैन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। यप, नेतन है जो 9.7 के ऑलमोस्ट 10,000 के गोल्ड पे, एंड लेज़ली 2,500 के गोल्ड में। ये तो बहुत ही अंडर फार्म्ड है। दिस इज नॉट लुकिंग गुड बिकॉज आई थिंक यहाँ पर लेज़ली ने काफी ज्यादा मिनियंस मिस किया है, प्लस आई थिंक वो AFK है। ऐसी रहा है यहाँ पे, और देखिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके डैमेज दिया जाए, लेकिन पीछे नेतन मौजूद रह गया बैकलेन को, और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है टीम के बीच में। और एक तरह आप बोल सकते हैं कि बेलरिक और अकाई दोनों डुओ खेल रहे हैं या डुओ और ट्रियो खेल रहे हैं, क्योंकि अकाई और बेलरिक दोनों एक दूसरे का जो है साथ छोड़ नहीं रहे, और एक ही बोल सकते हैं कि एक ही बंधन में बंधे हुए हैं दोनों। और लाइक ऐसे खिलाड़ी ना भाई मेरे को रैंक में भी मिलते हैं, जो कपल्स रहते हैं बेसिकली, वो दूसरी लेन पे रोटेट करते ही नहीं है, और उनके बाकी जो प्लेयर्स है वो लगातार फीड होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी लेन से नहीं हटते। और लगातार ये देखिए दोनों का साथ, दोनों साथ एक साथ, हम दोनों का साथ रहेगा साथ, लेकिन पकड़ा जाएगा कौन पीछे की तरफ से मेज के ऊपर पड़ा होता हुआ दिखेगा। पकड़ी पे जाएगी क्योंकि किलिंग स्प्री मिलेगा यहाँ पे, उसी के साथ कुछ चीजें वो यहाँ पे विराजमान होंगे मृत्यु गद्दी को। और ये देखिए मिस्टिकस का इस्तेमाल किया जाएगा, मैच डाउन कर दिया गया है। पेनरेटा की कोशिश अंदर की तरफ से आएंगी, लेकिन पूरी तरीके से क्या ही कर सकती है वो। लेज़ली अभी भी बेस की तरफ है, वो AFK होने के कारण गेम के बीच में नहीं आ सकती है इस समय। और इसी के साथ बेस को टारगेट किया जाएगा, अब बेस लॉक इन कर दिया गया है, और इसी के साथ ये क्रिस्टल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लेज़ली को बेस के अंदर ही मार दिया आई थिंक, ये बिल्कुल दैट वाज ब्रूटल। यहाँ पर काफी ज्यादा तरीके से उन्होंने डोमिनेंस पा लिया है, एंड आई थिंक यहाँ पर इतना ज्यादा गोल डिफरेंस की वजह से भी यहाँ पर बेस बचा नहीं पाए। लॉर्ड नहीं लगा, बट सुगुरु एज यूजुअल MVP लेके आ चुके हैं। निरंतारो आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उन्हें कुछ तो इश्यू हो रहा था गेम पे, एंड आई थिंक हाई जो लेज़ली है उन्हें भी इश्यू हो रहा था, क्योंकि लेट गेम पे भी नहीं दिख रहे थे, एंड उसके ऊपर से कोई भी गोल्ड उनके हाथ पे नहीं ना, उन्हें फर्स्ट आइटम बना, बस मुश्किल से चप्पल बना है, वो भी इतने गोल्ड पे। बट डेफिनेटली आई थिंक पूरी की पूरी टीम ट्राई की। आर्लेंग एमएल के बारे में बात करें तो, बट आई थिंक वो 4v5 सिचुएशन उनके हाथ पे ना रहा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ये जो मैचेस जो चल रहे थे अभी, जिस तरीके मैचेस गए यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि MM उनके एक तरीके से AFK थे। अगर वो होते यहाँ पे मैच के बीच में तो फार्म गैप इतना ज्यादा मिलता नहीं, और नेतन को इतना ज्यादा फ्री हैंड मिलता नहीं। अर्ली गेम पे उनको अच्छा खासा किल मिल गए थे, वो स्नोबॉल इतना अच्छा खासा उनको मिल गया था, जिसके कारण ये स्थिति आपके सामने आती भी बनी। और टीम जो है यहाँ पे ज़ेनिथ, उनकी तरफ से कमाल का गेम प्ले आता हुआ, और जीतेंगे इस मैच को वो आज के लिए। और इसी के साथ देवियों सज्जनों, आज के हमारे जो आखिरी मैच है वो खत्म होता हुआ गया है। आखिरी मैच था ये आज का, ये जो मोबा वार्मअप क्लास सीरीज है
वो स्क्रीम्स यहाँ पे अभी जो है खत्म हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट स्क्रीम जो है वो भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो रजिस्टर करना ना भूले एल्गामो स्पोर्ट्स पे, और अगर आपको रजिस्टर करना है अपनी टीम तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, चले जाइए, सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, डिस्कॉर्ड वगैरह पे आ जाइए, या फिर आप जा सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एल्गामो स्पोर्ट्स करके, वहां पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीम्स में। मैं तो आपका कास्टर सचिन रहा, मेरे साथ कास्टिंग कर रही थी पीची। सी यू इन द नेक्स्ट स्क्रीम्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।